Um, we will learn what are the modalities available for the management of or treatment of the psychiatric patients. So we will cover history of psychotropic drugs, classification of drugs, interpretation of data of the drugs, drug selection, dose duration and monitoring, treatment outcomes, the drug classes, other than drugs, brain stimulation methods, surgeries, hormonal therapy, and vaccines. So, in the history, these are the few bytes. For the centuries, plant extracts and other natural substances used as mood and anxiety influencer and sleep modulator like alcohol, coffee, tea, opium, bromides, hallucinogens. Opiums in 19th century it was used in the soft drinks also and was available over the counter. But the opium is also nowadays used for pain management and others, but it is a restricted drug. The next point is from 1930 to 1950s, the most effective biological treatment which was available for any psychiatric disorder was electroconvulsive therapy. In 1931, two psychiatrists in India described the ability uh, of a plant to reduce the symptoms of psychosis, and later reserpine became one of the first agents to offer benefit to the patient with schizophrenia, which is the extract of this plant. And the two psychiatrists were from India, from Nimhans, Dr. Ganpat Sen and Kartik Chandra Bose. So first ever chemical which was discovered for psychiatric disorder uh, was by the Indians only. In 1949, antimanic properties of lithium salts uh, was discovered, and first breakthrough occurred in 1950 and 1952 when chlorpromazine, which is an antihistaminic drug, was discovered as antipsychotic agent. So collectively, all these drugs which were used in psychiatry or psychiatric disorders were collectively called as tranquilizers because of their sedating effect. In 1952, iproniazid, a drug which was being tested as a treatment of tuberculosis, was observed to cause elevation in mood and was discovered as antidepressant, which is uh, MAO inhibitor. And MAO inhibitors later withdrawn from the practice because of the fatal cheese reaction. First, TCA or tricyclic antidepressant uh, discovered was imipramine, which was the derivative of chlorpromazine and was observed to alleviate depressive symptoms. In 1955, the availability of meprobamate marked the first time that treatment of anxiety and had a relatively wide margin of safety. So this is the brief timeline of discovery of drugs. Uh, Similarly, in 1957, chlordiazepoxide, a benzodiazepine, was found, and in 1958, another chemical family of compound was found, which is known as butyrophenones, under which the drugs comes haloperidol. The first atypical antipsychotic, or you can say second generation antipsychotic, which was discovered in 1950 was risperidone. And these atypical antipsychotics are also known as second generation antipsychotic, atypical neuroleptic, or serotonin dopamine antagonist. On the basis of their mechanism of action, they are also called as SDAs. Zimelidine, the first of these SSRI, which was developed in early 70s. So now the classification and categorization of these drugs. The drugs are classified on the basis of various factors, and one of the major factor is indication.
On the basis of indication, these drugs are classified as antipsychotic drugs or neurolapse, antidepressants, mood stabilizers, anti-anxiety, hypnotic drugs, and psychostimulants on the basis of their indication to psychiatric disorders. But the problem with this classification is the classification is not diagnosis specific. Means antipsychotic, for example, olanzapine is also considered as mood stabilizer, and a mood stabilizer, lithium, uh, is also considered as to reducing the suicidal intent in schizophrenia. So interchangeably, these drugs are used, can be used in one from another disorder. And the second point is, not officially recognized agent as psychotropic are used in the psychiatric disorders like clonidine for uh, opium withdrawal, propranolol as to cut the social anxiety, verapamil and pregabalin also for the anxiety disorders. So as a result, reclassification of these drugs being done according to the mechanism of action rather than by indication. So on the basis of mode of action, these drugs can be called as enzyme inhibitor or modulator, ion channel blocker, neurotransmitter releaser, modulators, receptor agonist, antagonist, partial agonist, or reuptake inhibitors. So how do we interpret the data for these drugs? The source of evidence can be many, like randomized trials, control trials, open label studies, clinical guidelines, discussion with each other, or our own experiences. But the more accurate data comes from randomized control trial and meta-analysis. So these two are the very specific and organized study of any drug, uh, which can conclude the usefulness or other, other things regarding the drug. And ultimately, in the clinical practice, one have to integrate all the relevant data for individual patient on the basis of the evidence available for the drug. So now the question is how to do a drug selection. So drug is selected on the basis of drug factors itself, safety of the patient, and the factors related to the patient. In drug factors, there are two terms, pharmacodynamics and pharmacokinetics. In pharmacodynamics, considerations include the mechanism of the drug, the dose response curve of the drug, the therapeutic index of the drug. Some drugs has low therapeutic index like lithium should be considered for the dynamics, the development of tolerance to the drug, dependence, and withdrawal phenomena. These things should be considered for drug selection. The adverse reaction should also be considered. On the basis of pharmacokinetics, the onset and duration of drug activity, interaction between the drug that alter the absorption or other factor for the drug should also be considered. The patient-related factors can be response to the medication, sensitivity to the side effect. Some patients are more sensitive to particular side effects, some are not, should be considered. The diagnosis and the genetic loading of the disorder is also considered. So, some drugs are recommended if genetic loading is more in the patient, like in bipolar, if genetic loading is more and prevalent in family history, then sodium valproate is preferred than the lithium. Lifestyle of the patient, if person is having sedentary lifestyle and having overweight, then the drug which is not causing the increase in weight can be used. Uh, like in antipsychotic, olanzapine used to cause more weight gain than the aripiprazole or cariprazine. Overall medical status like renal impairment, hepatic impairment should also be considered. Comorbid disorders,
like diabetes, hypertension. And the past history of drug response is also important. If one person is responded to the one particular drug in the past, that should be preferred in the current episode also. The patient's attitude means aversion to certain type of side effect should be considered. If the patient is working, working on machinery or working as a driver, so sedating agent should not be used in those cases. Patient's family history of drug response is also important. And now, what about the dosing, duration, and monitoring of the drug? Uh, for dosing, the things which should be keep in mind is inherited sensitivity, ability to metabolize the drug. Some people are rapid metabolizer, like for valproate, few individuals have rapid metabolizing ability. Concurrent medical disorder should also be considered. Uh, for example, the drug side effect of one drug may not hamper the profile of another medical disorder. Uh, should be considered. And history of exposure to previous medications. If the history is available, then exposure history should be considered. Now the point is the drug must be used in effective doses for sufficient period. Okay, do not underdose the drug and give an ample amount of time to say the drug is working or not. Subtherapeutic doses and incomplete therapeutic trials should be avoided. And for almost all of the drug, it takes 2 to 6 weeks to act. So before 2 weeks at least, the drug shouldn't be stopped if it is in the uh, adequate doses or otherwise indicated. Time of the dosing is usually based on the plasma half-life of a drug and its side effect profile. Hmm. Side effect profile, like if the drug is uh, causing more sedation, the drug can be used in the night time or bedtime. If it is causing orthostatic hypotension, then also it can be used in night time or bedtime. Duration of the treatment. Almost every patient used to ask this question, that how long do I need to take the medication? Uh, the answer is, of course, depends on multiple variables like nature of the disorder, whether it is long lasting or it remains there for the short period of time. The duration of symptoms, how long is the illness is he is having, the family history, tolerability of the uh, person, and benefits of the patient which he is having with the drugs. So risk benefit ratio should also be considered while duration of treatment is discussed. For most of the psychiatric disorders have high rates of chronicity and relapse. And because of this, long-term treatment is often needed for psychiatric disorder. But it is not always the case. Sometimes it is required for the shorter period of time also. So the treatment in psychiatry is usually broken into three steps. Uh, the first one is initial therapeutic trial, continuation phase, and maintenance phase. In initial therapeutic trials, uh, is for observing the effect of the drug on psychopathology, then continuation phase and maintenance phase for prevention of relapse and recurrence of the illness. Now the treatment outcome. You have put a patient on medications, then how you will observe the outcomes, various outcomes of the treatment or management. The goal of psychotropic treatment is to eliminate all the manifestation of the illness. So a holistic approach should be made to combat with the various symptoms. Sometimes some symptoms are not uh, being controlled by a drug, so that the second or third study should be considered to control or alleviate those symptoms. In treatment outcomes, remission is
called as the degree of improvement below the syndromal threshold. When the psychopathology is severe and crossing the syndromal boundary and diagnosed as a disorder, when you are going to treat, you are treating a disorder and the symptoms are now subsyndromal. A syndromal diagnosis cannot be based on the criteria of that disorder. Then the patient is in remission. If the patient is improved but do not experience a full resolution, are considered to be responders. So in depression, response is usually defined as a 50% or greater decrease from the baseline on a standard rating scale. But this for the previous periods, but now the scenario has been changed, and the improvement is not calculated on the base of reduction of symptoms on a scale. It's a holistic approach to say the person is responding. The two terms relapse and recurrence. While you are treating the patient and patient is not recovered fully from the disorder, and in between the patient start having the symptoms again starting increasing or developing, then it is called as relapse. When the patient is in remission, the disorder is now the patient has touched the baseline of the personality, and again the symptom recurs after remission. It is called as recurrence of the illness or disorder. Treatment failure is also a type of outcome. Uh, the repeated drug failure should prompt reassessment of the patient. If you are treating a patient and the patient shows no response or failed response, you should consider the diagnosis first, whether your diagnosis was correct or not. And second, observe for the adverse effect. The adverse effects are also a common reason for non-compliance. For example, achynesias, which resemble psychotic withdrawal, or akathisia and neuroleptic malignant syndrome. Means adverse effect may mimic as the psychopathology. So you should look for the side effects. The patient is complaining of side effect. You might consider those things as psychopathology. So do consider the adverse effect of the treatment or drug. Intolerance of the side effect may be most common reason for treatment failure. This is the case of non-compliance. Third, the appropriate dose. If the person is not being given appropriate dose of any drug, the response may be not, which is wanted by the person and the doctor. Fourth is if any kind of interaction between drug to drug is reducing the efficacy of the treatment, should also be considered. Non-compliance of the patient. Another outcome is treatment resistance. When you have ruled out all the possibilities of non-response or treatment failure, the some patient fail to respond to repeated trial of medications, and no single factor can explain the ineffectiveness of various interventions in these cases. Means you have tried adequate doses, adequate time of trial of a drug. You have ruled out the non-compliance. You ruled out the interaction. You ruled out the metabolizing ability of the person. The person can be labeled as treatment resistance. For treatment resistance, the strategies which are acquired is switching to the another drug. Drug combination can be tried. Relatively high dose therapy can be given, and treatment for a particular drug can be extended to 2 months. This means it takes 8 months to declare a patient treatment resistant. Tolerance is another outcome. Tolerance is needed to increase the dose of a drug to maintain clinical effect.
And commonly it happens with benzodiazepines like clonazepam, lorazepam. And this phenomenon is used as a basis of starting some drug at subtherapeutic level. So the uh, tolerability is not come into the picture. And drug with similar pharmacological action often exhibit cross tolerance. Means if you are giving one benzodiazepine and replacing another, the cross tolerance may be observed. Sensitization. It is the reverse of tolerance and is said to occur when there is an increased sensitivity to a uh, drug effect over a period of time. And for most of the psychotropic drugs, the therapeutic index is high. Withdrawal phenomena with the drugs. Withdrawal symptoms can occur in uh, the treatment phase when person missed the dose or stop the drug suddenly. The drugs which are having shorter elimination half-life are more prone to withdrawal symptoms and can result from missed doses. So, person may complain of relapsing the symptoms, but actually these are the withdrawal, which will occur in the immediately stop after immediately stopping the drug or when the dose is missed. Usually, relapse doesn't occur immediately after stopping the drug. It takes weeks and months. So, do consider these are the withdrawal of the drugs. Withdrawal can also occur by auto-inhibition, like paroxetine. Paroxetine is metabolized by cytochrome P450 and is also inhibitor of this enzyme. So auto-inhibition can also cause withdrawal of the symptoms. Poor bioavailability with the generic agent is also a cause. Usually symptom resolves within few weeks, so the persistence of symptoms argues against withdrawal. If the symptoms continues for a prolonged period of time, then you should consider for psychopathology rather than withdrawal of the drug. So these are the classes. Uh, First one is antidepressants. Antidepressants has various classes like SSRI, SNRI. SSRI is selective serotonin reuptake inhibitor. Examples are fluoxetine, paroxetine, escitalopram, sertraline. SNRIs are duloxetine, venlafaxine, desvenlafaxine, milnacipran, levomilnacipran. Tricyclic antidepressant examples are amitriptyline, still in uh, use but in the lower doses. Clomipramine is also used for OCD nowadays. Uh, MAO inhibitors like phenelgine, seragine, and the third one is not in the use now, are rarely used. Atypical antidepressant, which has a different mechanism of action, like bupropion, nifazodone, vortioxetine, trazodone, and mirtazapine are another class of drug. So look at this picture, how the antidepressant acts. The point number one is for reuptake inhibition. When in the synapse, neurotransmitters are available which had been blocked for to be reuptaken in the presynapse. So SSRI acts here and TCS acts here. The second point is autoreceptor. The autoreceptor, when you give a drug, there is ample amount of neurotransmitter in the synapse. Then autoreceptor sends the biofeedback mechanism to the presynapse that more receptors are available. Then start reducing the production of neurotransmitters. So here is the mechanism of autoreceptor. The MAO enzyme inhibitors acts on monoamine oxidase, which are present in the presynapse, where the metabolism of neurotransmitters are blocked. So availability is increased in the presynapse for release of the neurotransmitter. So this is the dosage chart for SSRI. Fluoxetine is 40 to 80, paroxetine is 40 to 60 milligram, and sertraline is 150 to 200.
The commonly used amitriptyline is 150 to 200, and others are bupropion 200 to 300, mirtazapine maximum up to 45, and venlafaxine is for 150 and 225. These are the side effects of antidepressants. Uh, the cholinergic side effects are dry mouth, urinary retention, blurred vision. Others are constipation, sedation, sleep disruption, weight gain, headache, nausea, GI disturbance, abdominal pain, inability to achieve an erection, inability to achieve an orgasm, loss of libido, delayed ejaculation, agitation, and anxiety. So these side effects should be keep in the mind, particularly the sexual side effects, which are more cumbersome to the patient. This is the classification for antipsychotics. Here is the first generation, second generation, and third generation antipsychotics. First generation is divided into three: butyrophenones, phenothiazine, thioxanthines. And the second generation, the common drugs are clozapine, olanzapine, risperidone, quetiapine, which are being used, and uh, lurasidone. The third generation atypical antipsychotics is aripiprazole and cariprazine. These are the partial agonists of the dopamine receptors. In psychosis, the activity of dopamine is increased. So, by blocking the dopamine receptor, the antipsychotic drugs acts to reduce the dopaminergic activity. This is the dosage chart. For common drugs, aripiprazole maximum dose is 30, uh, the required dose is 10. Clozapine is 125, 12 point starting doses 12.5 and can go up to 900 milligram. Haloperidol up to 10 milligrams, and for olanzapine it is 30 milligram, and risperidone is 6 milligrams. These are the common drugs. The side effect of first generation antipsychotics include muscle rigidity, significantly slowed movement, which are the uh, collectively symptoms of EPSCs. EPSCs is known as extrapyramidal side effects, which are caused by blockade of dopamine receptor in nigrostriatal pathways. Extreme restlessness can occur, like known as akathisia. The long-term side effect, tardive dyskinesia, is also caused by the long-term use of antipsychotic. These are the involuntary movement of the face, especially around the mouth and lips. NMS is a fatal and serious side effect. It is often life-threatening condition characterized by muscle rigidity, fever, sweating, and autonomic instability. For second generation, the side effects common are sedation, dizziness, weight gain, sexual dysfunction, cardiac effects like QTC prolongation, hypotension, dry mouth, and constipation. And for third generation, the common side effects are nausea, vomiting, headache, insomnia, constipation, tremors. So you can see, uh, moving from first generation to third generation, the side effect of the drug is changed. The profile of side effect of the drugs classes are changed, and it is minimal in the third generation. Like EPSCs are rare, NMS are rare, and other problematic uh, side effects are rare in this third generation. Now, in the mood stabilizer, the anti-epileptic drugs like valproate, carbamazepine, lamotrigine, and oxcarbazepine are the widely used drug for treating mania. Okay. Other have plus and minus results, are not classified as mood stabilizers. Another mood stabilizer, which is not in the class of anticonvulsant drug, is lithium. And lithium has a narrow margin of safety. You can see here for maintenance therapy, zero point 0.6 to zero point 0.8 milliequivalent per liter of drug is required in the blood.
and for acute mania 1 to 1.2, and more than 1.5 is considered as toxic level. So it has a narrow therapeutic index, and regular monitoring is required for lithium. This is the mechanism. Lithium acts on GSK3, which is known as glycogen synthase kinase 3, and valproate acts on HDAC, which is known as histone deacetylases. The common side effect of lithium is dizziness, drowsiness, tremor, difficulty in walking, dry mouth, increased thirst, urination, nausea, vomiting, loss of appetite, rash, or blurred vision. In case of toxicity, when the level are more than 1.5, uh, these symptoms can be seen: fine tremors of limbs, cogwheel rigidity, polyuria, polydipsia, agitation, confusion, and delirium. When it is more than 2.5, delirium, stupor, clonus, seizure may ensue. QTC interval prolongation can be seen. Renal failure may occur. Respiratory complication may occur. Eventually, coma or death are the common consequence of lithium toxicity. In lithium toxicity, recently we have uh, managed a case on hemodialysis whose serum lithium was 3.77. So this is the treatment for lithium toxicity. The mainstay is to hydrate the patient, and the diuresis is used to eliminate the lithium fast from the body. And if the level are more than 3.3 or 2.5 with symptoms of delirium, agitation, confusion, dialysis can be started. An adverse effect of commonly prescribed mood stabilizer in the group of anticonvulsants are for carbamazepine, it is nausea, dizziness, drowsiness, dry mouth, constipation. Serious side effect of carbamazepine is worsening of depression, suicidal thoughts, severe dizziness, swelling, itching, or trouble breathing. Uh, for lamotrigine, these are backache, chest pain, cramps, inflammation of the nose. Serious side effects are altered mental state, Stevenson-Johnson syndrome. For sodium valproate, it is nausea, vomiting, pain, dizziness, drowsiness, blurred vision, and hair loss is the symptom of concern for females and for males also. Change in appetite and weight gain. The serious one are confusion, easy bruising, unusual bleeding, worsening of seizure, flu-like symptom, bone marrow suppression, and fulminant hepatic failures. Now coming to the anxiolytic drugs, the main class is benzodiazepine. The common examples are diazepam, flunitrazepam, lorazepam, alprazolam, and clonazepam. Midazolam is used in anesthesia. So the side effects of anxiolytics are dizziness, drowsiness, confusion, nervousness, loss of appetite, feeling depressed, inappropriate behavior or mood swing, and risk of addiction is there with benzodiazepine because of the tolerability. So if you have to give this drug, give for a shorter period of time and withdraw after the effect of another drug is achieved. Breathing difficulties can occur due to impaired ciliary movement in the trachea. Liver failure may occur due to anxiolytics like benzodiazepine, and in case of alcohol withdrawal syndrome, it is tricky to give benzodiazepine because already the patient is hepatic compromised because of the alcohol, and you have to give benzodiazepine as a substitution therapy. So the conclusion is tolerability and safety of the patient often become the determinant of treatment success or failure. By the uh, it was concluded from a CAT study and STAR-D trial of the antidepressants.
The other drugs which are not known as psychotropics or neuroleptics, which are used in psychiatry, is thiamine in case of alcohol dependence to replenish the deficiency, baclofen as an anti-craving drug, acamprosate as an anti-craving drug, disulfiram as an aversive agent for the prevention of alcohol use relapse. Opioid agonists like buprenorphine, tramadol, tapentadol are used as a substitution therapy. Clonidine are used as a central sympatholytics. Opioid antagonists are used as blocking agent to prevent the relapse. Dopamine reuptake inhibitor bupropion is also used for, it's an antidepressant which is also used for anti-craving agent for tobacco dependence. Further, for dementia and Alzheimer's, cholinesterase inhibitors are there, NMDA receptor antagonists are there, phosphodiesterase 5 inhibitors, drugs like sildenafil, tadalafil are used for erectile dysfunctions. Sympathomimetic agent like methylphenidate is used for attention deficit hyperactivity disorder in children. The drugs which are used to counteract psychotropic induced side effect or adverse effect are exemplified here, like antihistamine are used for extrapyramidal side effects, dystonia or akathisia. Anticholinergic drugs like trihexyphenidyl are also used for extrapyramidal side effect, dystonia and akathisia. Dantrolene is a postsynaptic muscle relaxant is used in neurolap malignant syndrome. Dopamine agonist bromocriptine is used in neurolap malignant syndrome or and in hyperprolactinemia due to antipsychotics. So this was all about the drugs. Now coming to the brain stimulation method as a modality of treatment in psychiatric disorders. These are the examples of brain stimulating methods: cranial electrical stimulation, electroconvulsive therapy, PDCS, TMS, magnetic seizure therapy, implanted cortical stimulator, deep brain stimulator, or vagus nerve stimulation. These modalities are can be used for psychiatric disorders, starting with the electroconvulsive therapy. In electroconvulsive therapy, a small amount of electricity is passed through the brain, which induces a therapeutic seizure. Hmm. And it has been seen that for depression, bipolar disorder, schizophrenia, and catatonia, this therapy is beneficial for the patient. Nowadays, only modified ECT can be given to the patient. Modified means the ECT must be given under the anesthesia, which is provided in the Mental Health Care Act 2017. CES, uh, it is usually called as electrosleep. The current passed through this device is much lower than the electroconvulsive therapy. So this induces only sleep. This is the device. Transcranial magnetic stimulation known as TMS. Uh, and this is magnetic seizure therapy. Magnetic seizure therapy means the seizure is induced by the high powerful magnetic stimulation. Now, deep brain stimulation and vagus nerve stimulation introduced about a decade following the first trial of TMS. So, this is first approved by US FDA in 1997 for the treatment of neurological condition like to reduce the frequency of epileptic seizures, essential tremor, and Parkinson's tremor. But later, it is introduced to psychiatry also and found useful in uh, treatment resistant severe obsessive compulsive disorder.
These are the picture of DBS and VNS. Now coming to the psychosurgeries, in the era when uh, understanding was not so developed, there are the traces of documentation of trephination, which used to be performed on psychiatric patient. But later development of another new modalities like ECT and chlorpromazine and other drugs, the psychosurgery is the last option for the psychiatric disorder and with the consensus of multidisciplinary team. So it is performed in small, highly selected group, and when the multidisciplinary team thinks that the patient is fit for the surgery, then only the surgery can be done. There are the few examples like subchoroid tracheotomy is used for OCD and major depression. Anterior cingulotomy is for depression and OCD. Limbic dichotomy, depression, OCD, and anxiety disorder. Anterior capsulotomy for OCD, depression, and anxiety. So mainly these surgeries are for depression and obsessive compulsive disorders. Reproductive hormonal therapy is also available, like in the premenstrual dysphoric disorder. Gonadotropin releasing hormone agonist can be used, the compound which reversibly suppress the pituitary secretion of gonadotropins, FSH and LH. So it comes from the ovarian steroid secretion. Estradiol can be used in perimenopausal depression or in postpartum depression. Androgen administration can be used in midlife depression in both men and women and is characterized by a steady decline in the production of androgen. In the last vaccine, development of vaccine, particularly in relation to tobacco dependence, are in progress. No conclusive data till date can be drawn, but the thing is in the pipeline, and in future this may be available for tobacco dependence and other disorders. So to summarize, follow the general guidelines of psychopharmacology while treating the patient. Introspect in case of treatment failure. When the treatment is failed, consider the cause of failure to declare the patient as a treatment resistant. Consider dependence potential in case of tolerance, particularly with the benzodiazepines. Various classificatory drugs are available for various disorders. Keep in mind the other related drugs which are used in psychiatry. Brain stimulation method and psychosurgeries are available. Biological therapy, hormone therapy can be option in related disorders like postpartum depression and all. And the vaccines are being developed. Thank you. From Department of Psychiatry. I am Dr. Swaleha Mujawar. I am the assistant professor here. And today's topic is very, very interesting. We are going to learn about electroconvulsive therapy. So आप लोगों ने बहुत सारे हॉरर मूवीज में देखा होगा, लोग चिल्लाते रहते हैं और उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं. लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, असली में इट इज नॉट how they show in movies or how they show in dramatization. Probably एक shock value के लिए थोड़ा मसाला मिर्च add करने के लिए बताते हैं. And that probably used to happen many years back when there was no anesthesia, when there was no choice. But nowadays it's like any minor OT procedure. So बहुत ही अच्छा procedure है, बहुत effective procedure है. So let's see what we are going to learn. We are going to learn what ECT is, a little bit about the history of ECT, then the mechanism, how it acts, indications, contraindications, what is the whole process of ECT, a summary, and then some MCQs. So जिसको भी नींद आ रही है या जो भी जोक्स बोलना चाहता है, उसी को MCQ सबसे पहले पूछा जाएगा. ठीक है? So what is ECT? So yes, by definition, ECT is an electric shock
delivered to the brain. Come, sit. So people who are just settling down, we are learning about ECT today. So yes, like they show in the movies or dramas, yes, electric shock laga rahe hain, but as you can see in this diagram here, we are placing two electrodes to the brain, mostly at the temples, and through this electricity goes to the brain, and what happens next we'll see. But basically it's an application of electricity to your brain. It is going deeper into it. It is an artificially induced grand mal seizure. So as you can see here, this is an EEG. So a lot of electrical activity is going on in your brain. So when you apply a very small current for 0.1 to 0.5 second, and that to a current as low as 70 to 130 volts. So after application of a very small current, a lot of electrical activity starts happening inside your brain. And this is what ECT is essentially. So it is an artificial induction of grand mal seizure, which consists of two phases: tonic phase for 10 to 15 seconds and a clonic phase which lasts for only 30 to 60 seconds. And here again it is happening because we are applying the electrical current. So yes, the current is also very small, and the seizure which is happening, that is also for a very small period of time. Now let us go into a little bit history. What is the background of ECT? So in earlier times, researchers noticed that there was a very high density of glial cells in epileptic brains. So patients who were suffering from seizure disorder, patients who were suffering from epilepsy, they had a very high density of glial cells inside the brains, and these glial cells were very less in number in schizophrenic patients. तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है तो let's just add it up and see what happens. So what happened was that they used camphor. Camphor is a chemical. They gave it intramuscularly, and then they induced seizures. So it's an artificially induced seizure in an attempt to replicate the effect of higher glial density cells. So what they wanted was to increase the glial cells inside the brain of psychotic patients. So ECT was first introduced by an Italian psychiatrist, Ugo Serletti and Lucio Beni, in April 1938. After that, a lot of previously used therapies like insulin coma therapy and the chemical induced or the camphor therapy, they were replaced by ECT. Because ECT had lesser side effects, it was less painful also for the patient. And insulin coma therapy was introduced by a German psychiatrist, Manfred Sackel. But after ECT came, all the older procedures became obsolete. So this is an ECT machine. We have one in our ward and in our OPD also. So if anybody wants to see. So by late 1930s, chemically induced convulsions were replaced by electrically induced convulsions. And because the treatment involved electricity and convulsions, that's how the name also came into being, that it's a electroconvulsive therapy. So this is a brief summary of the history. 1934, we have pharmacotherapy introduced by someone called as Meduna. After Meduna, then a lot of researches were being done, and they appointed a task force for ECT. In 1976, clear guidelines were given for the use of ECT. So yes, it is a relatively newer procedure, it's an evolving procedure. So what do we do in ECT? ECT is very effective, but can have temporary side effects. So that is why people are very skeptical that should we give ECT or not. Then there are ethical consideration, because a lot of psychotic patients don't understand what is happening.
So who do we take consent from? We can't give forcefully electroconvulsive therapy. So these are some medico-legal issues which come. And also as doctors or as psychiatrists, we don't know exactly what is going on in the brain. So if the relative or the patient asks you, how does this ECT work, or what is going to happen in my brain, what we have is just a hypothesis. So even we don't know what is exactly happening, but we know that patient improves. Types of ECTs you should know. So depending upon the mode of administration, I'll explain this again in the diagram also. So it can be either bilateral or unilateral. If you are giving without anesthesia, it is called as direct or unmodified. We do not give this now. Now we give it with anesthesia. So with anesthesia, it is called as modified ECT or indirect ECT. So what is the whole procedure of ECT? First, again, an anesthetic is given. So depending upon that direct, indirect ECT, then we decide the duration of the current. Then, depending upon the duration, it can be either continuous, 0.5 to 1.5 millisecond. In ultra brief pulse, it is less than 0.3 milliseconds. So very, very small period, the current is applied. Then if it is unilateral or bilateral. So after this, what we do is, to reduce side effects, the best kind of ECT is an indirect, brief or ultra brief and unilateral. So this is what is usually the choice of ECT. So in the process of ECT, what we do is, yes, we give a general anesthetic. We also give muscle relaxants because we are inducing seizures. A lot of time patients can have tonic-clonic convulsions which are very, very severe. So they can have body ache or sometimes fractures or dislocations. So we give general anesthetic, we give a muscle relaxant, then we insert a tongue guard. Tongue guard is inserted again during convulsions. Patient can bite their tongue. So the tongue is not bitten and the teeth are also okay. We insert a very small mouth guard just before applying electrical current. Then electrodes are placed on the scalp and then the electric current or a shock is given. Usually the seizure lasts for 15 seconds. Now coming to the mechanism of action. So a neurotransmitters theory says that ECT works just like antidepressants. It changes the way brain receptors receive the mood related chemicals. So a lot of chemical processes are happening inside your brain. Whatever chemical processes are changed by the antidepressant, same happens with ECT also. This is a neurotransmitter theory. So not proved, it's just a theory. Anticonvulsant theory says that ECT-induced seizures teach the brain to resist seizures, and this might make the brain stronger or more resistant to stress. Neuroendocrine theory says that when the seizure is occurring, hypothalamus releases a lot of neuropeptides which regulates the mood. Brain damage theory, this has been disproven, but just for theoretical purposes. An illusion that the problems are gone and euphoria, which is frequently observed as a result of brain injury, is just a theory. Psychological theory says that depressed people often feel guilty and ECT satisfies their need for punishment. Uh, we don't believe in these theories, but as a theoretical, just for knowledge purposes, remember them. Coming to indications, all patients coming to our OPD or in our ward do not get ECT. So how do you decide which patients should be taken for ECT? So these are a few of indications. First indication is severe depression. So depression, when it is so severe that the patient says that I want to end my life, patient is extremely suicidal, this is when we go for ECT. Then schizophrenia, again mostly severe cases. Mania not improved by medication.
Postpartum psychosis, in this period, especially due to breastfeeding, if you're not able to give medications, then ECT is a choice. Schizoaffective disorders, some medical disorders like Parkinson's disease, neuroleptic malignant syndrome, also have ECT as a drug of choice or treatment of choice. Also, when we need a rapid response to antidepressants, sometimes, especially if the patient has high suicide risk, patient is not eating, patient refuses medication. So in these also patients, we can't wait for 15 days for the medications to act and then go ahead with treatment. Patient can die during this time. So in these medical emergency conditions, we give ECT. So these are a few indications of ECT. Failure of drug treatment, you are giving medications for 6 months, 10 months, patient is not responding, so then you might have to go for ECT. Patients who are unable to tolerate side effects of drug treatment, like patient has a lot of vomiting or not able to take the medicines. Previous history of good response to ECT. Again, suicidal ideations, don't just think, just suggest ECT to the patient. Severe catatonia, catatonic patients respond very well to ECT. Again, when medications are insufficient, symptoms are severe, so it depends upon your clinical judgment also. But these are a few indications for ECT. Contraindications. When will you not give ECT? One is increased intracranial pressure. So you're applying electrical current to the brain is having a lot of electrical activities, seizures are going on. So if there is already an increased intracranial pressure, damage to the brain can occur, so you should avoid in these patients. Rest of the contraindications are mostly related to anesthesia, like if the patient has coronary artery disease, hypertension, aneurysms, arrhythmias, these can cause problems during anesthesia. Myocardial infarction, especially in the past 3 months, is a contraindication. Then cerebral infarction, that is stroke. Active pulmonary diseases, again, because we are stopping the heart and the lung for a very small period of time when we give general anesthesia. So all these are contraindications. Sometimes just before we give atropine, just after we give muscle relaxants. So if there are contraindications to these, also you might have to stop ECT in the patient. Then again, recent strokes, if the patient is taking barbiturates, again, it can be a problem, especially when the patient has to come out of anesthesia, it causes problem. Some psychological disorders like hysteria, hypochondriasis, we avoid giving ECT. So it's not a contraindication per se, but it should not be given. So patient has been decided for ECT. आपने decide कर लिया अब इसको ECT देना ही है, तो what are the pre-treatment things that you should do? One, do a physical investigations, अच्छे से physical examination करो, get a medical history done, get blood and urine tests, chest X-ray is important, ECG, and that the patient should be nil per oral, that is, should not take anything for at least 5 to 6 hours minimum. Materials required for ECT. One is a ECT team which consists of a psychiatrist, an anesthetist, a psychiatric nurse, and some paramedical staff. Then we have the ECT machine, electrodes, the medications which are in a cart. A treatment center should consist of waiting hall for the relatives, a preparation room, a room in which ECT is given, the ECT suite, and we also need a recovery room. Patient might take 2 to 3 hours to recover from the ECT. So recovery room is something where we monitor the patient. And EEG, if it is there, it is good so that we can monitor the electrical activity of the patient. Now, is one single ECT effective? Answer is no. We have to give ECT at least 3 times a week. We can reduce it to twice a week once the symptoms start increasing, but we need to give a lot of sessions. I'll tell how many sessions, but in a week 3 ECTs is okay.
If we give more, cognitive problems can occur. So that is why 3 times a week is the maximum limit, twice is better. Coming to electrode placement, so this is a bitemporal placement in which we are placing electrodes at the temples. So what we do is measure from the outer canthus of the eye to the tragus. The midpoint is where you are supposed to apply your electrodes. So it's not very hard and fast that you measure with a scale or something, but just have an approximation, just see where the midpoint is there. There should be no hair, there should be no inflammation at that area, and that is where you apply the electrodes. So this is a bitemporal. In bifrontal, you are applying at the frontal lobe. So this is where you are applying. And bilateral means you are applying both sides. Unilateral is applying just one side. So the second side is spared, only one side the electrodes are applied, and that is also enough in some cases at least. Treatment consists of at least 6 to 12 sessions. So a single ECT is usually not effective, especially in severe cases, and we do give ECT in severe cases only. So 6 to 12 is an approximate amount of session required for depression. For treatment-resistant psychosis and mania, sometimes you might need larger number of sessions, almost 20 also. If the patient is catatonia, patient responds very well to ECT. So patient can receive just 3 to 5 treatments also. So depending upon the diagnosis, depending upon the patient, how their response is, we decide the number of sessions, but at least 3 to 4 is the minimum that we need to give. Then yes, before giving actual anesthesia, we give something to decrease the secretions, because during seizures, patient can have a lot of frothing saliva, and that saliva can go in the lungs. You don't want the patient to develop aspiration pneumonia. So we give atropine or we give glycopyrrolate so that all the secretions of the patient are to a minimum or the secretions are not present. This will decrease secretion, will counteract the effect of vagal stimulation induced by ECT. Vagal stimulation leads to parasympathetic overactivity. So that is also balanced by your atropine and glycopyrrolate. So you need not remember the doses, but for people who are interested, atropine is given for 0.6 mg, scoline is your muscle relaxant. It is given 25 to 40 mg, and your general anesthetic, the general anesthetic drug which we use is sodium pentothal, which is given 150 to 250 mg. This is known as a short acting anesthesia because it lasts only for 5 to 10 minutes. Muscle relaxants are given to prevent muscle contraction during the seizure, and it leads to reduction of fracture or dislocation of the bone. Now the role of nurse can be divided into before ECT, during ECT, after ECT. So before ECT, what do you have to do? Check for informed consent. आजकल बहुत cases हो रहे हैं, so medico legally you should be very very safe. Patient should not say कि मुझे ज़बरदस्ती ECT दिया या this was against my will. So always take a written informed consent from the patient or relative. Provide detailed explanation because patients are very anxious, sometimes relatives are anxious. So explain the whole procedure to them, what is going to happen. Patient is kept nil orally, 8 hours is very ideal. So after dinner, you can just tell the patient not to eat anything, not to drink anything, and early morning we can give anesthesia. So we get at least 8 hours of nil orally. In emergency situations, it can be decreased to 3 to 4 hours also, but try, because we are giving anesthesia. The patient eats something and we give anesthesia, vomiting and aspiration can occur. So patient should be kept NPO as much as possible. Remove metallic articles, so watches, bangles,
rings, hair clips, nothing should be there. Everything, especially the metallic things, should be removed from the patient. Also, check for a physical examination, even though you have done it before, just before ECT, a physical examination should be done again. Check for all the investigations which have been done, ECG, blood investigations, whatever. Sometimes patient can have artificial teeth or loose teeth. Always check for teeth. Remove lipstick, nail polish, makeup is not required before ECT. So patient should be clean and having a bath is preferable, and no tight clothes. So, and especially around the neck, there's no need for dupatta. If the patient can have an OT gown, that is the best. But if the patient is in their own clothes, it should be very loose. Then ensure that the bowel bladders are emptied. Oil-free hair should be considered, so a shampoo should be again 1 day before is preferable. Whatever pre-medications like atropine or glycopyrrolate, you can give it. It is given half an hour before ECT so that the secretions dry up during the time. Place the patient on a trolley in the waiting room or in the ECT room, whatever is there. Transfer the patient to a well padded bed in the dorsal position. Again, reassure the patient. Uh, the anesthetist administers the muscle relaxant and the general anesthesia. Verify the dose always, and a mouth gag should always be placed. Now during ECT, so you have done all this, the doctor is ready to apply the current or the electrical shock. Support the shoulders and arms. If the patient has violent seizures, just make sure that you lightly touch the shoulders or wherever there's a lot of seizure activity going on. Hyperextended head with support to the chin. This is again to prevent any aspiration, to prevent tongue fall, because even if the tongue falls back, oxygen might not go to the lungs. So a hyperextended head with chin support, oxygen is given usually through a mask, 100% oxygen. Electrodes, once it is there, it should be dipped in saline or jelly. See that a proper generalized tonic-clonic convulsion comes. After the patient has had seizure activity, suction should be done, especially if there is, I know glycopyrrolate prevents secretions, but some patients do have a lot of secretions in spite of that. So try to do suction if you see any secretions there. If the patient is not able to breathe, you can place an airway inside, give oxygen and prevent complications. After ECT, observe for vitals. So you check saturation, pulse, blood pressure. These are the things which should be monitored. Put up the railings. Patient can be very drowsy or confused. Patient can fall down. So safety of the patient is most important. Place in a lateral position, because again in lateral position, if the secretions are there, they'll flow down the mouth and they won't go inside the lungs. If you see some secretions, wipe it, no need to do suction. It irritates the patient if the patient is conscious and if you're doing suction. Again, record the vitals, BP, for how long the patient has loss of consciousness. And once the patient is stable, you can check the vitals and everything for every 30 minutes till the patient has full recovery. If the patient wants to sleep, patient can sleep, no problem. Reorient the patient to ward. Like I said, patient is very confused after the seizure. If there are some injuries, if the patient is complaining of some pain in shoulder or pain in the back, record it, inform it, keep the unit tidy. So after ECT is done, what are the side effects which you see for? Most common side effect is dizziness, dryness of mouth, because we are giving things which will decrease secretion, headache, muscle pain, nausea, vomiting, jaw pain. These usually don't occur if we give a good muscle relaxant. Sometimes patient can have unsteady gait, poor concentration, anxiety,
Incontinence can also occur. If you are not placing the tongue guard properly, bite can occur. Cardiac arrest, delirium. A very, very commonly seen side effect is memory impairment. So patient says that I am not able to remember what I ate for breakfast or what I ate last night, but it is not permanent. It is a temporary muscle memory impairment. So memory will come back to normal once the patient recovers from ECT. Sometimes hepatic function can be decreased. Very, very rarely medical complications like heart problems, death or other side effects related to anesthesia can occur, but it's quite rare, it's not very common. So just to summarize, let's just go through whatever we have read. ECT is production of an epileptiform convulsion which can last anything from 30 to 80 seconds. Modified ECT is given, so that is with anesthesia, with muscle relaxant. We are passing a very small amount of current for a very small duration of time. Then we can give bilateral ECT or unilateral ECT. The number of sessions also vary. Usually it is given 3 times a week. In depressed patients, 6 to 12 treatments, schizophrenics and mania patient might need more. Reassess the patient in between treatment and stop when there is no improvement. Don't be very over enthusiastic. If you see that the patient is not responding to treatment, you can stop it also. Some of the side effects can be cardiac, memory, headache, prolonged seizures, side effects of anesthesia, which you will learn in anesthesia classes. Contraindications are again recent MI, raised intracranial pressure, stroke, relative contraindications like fever, arrhythmias, hypertension, these can occur. Mortality is very less, between 1 in 1000 or 1 in 10,000 also. Now coming to the MCQs. So I have told this before. Which of the following conditions is known to have the best response to ECT, or what condition will you definitely say that ECT should be given? Good, good, good. So everybody was paying attention. Good, I'm happy. The commonest side effect of ECT is no, 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 no. Amnesia is loss of memory. Okay, dementia is a cognitive impairment. उसमें भी loss of memory होता है. This was just to confuse you guys. But remember amnesia. So whenever you will get MCQs in your exams, don't be in a hurry to answer. अच्छे से पूरा पढ़ो. Except लिखा है, commonest है, least common है, क्या है. Just because we'll always give you two options which are very similar just to confuse you. So what is true about electroconvulsive therapy? It is contraindicated in brain tumors. It requires 70 volts. Treatment for major depression. Very good. So the answer is all of the above. Advantages of unilateral ECT. That it is more effective, more preferable, less number of treatments, or less confusion, amnesia and other side effects. Just apply common sense that see, if we're giving unilateral, the amount of current is less. So it is less confusion. So it is not more effective, it is less effective, but the side effects are also less. So if you feel that the patient can have side effects, then you should prefer unilateral. But if the patient is very severe, you need good effects, then bilateral should be preferred. This is a rote learning question, and if you were paying a lot of attention, then only you'll get. This is a difficult question.
So the first use of convulsive therapy for the treatment of psychiatric disorder was by Meduna Bennett, Igaz Moniz or Kurt Schneider. No. Igaz Moniz is your neurosurgery. So he did temporal lobectomy. Some of you are correct. So one Meduna. This was there in the lecture. I know history is a very boring topic, and it's okay. At least you've understood the procedure of ECT and you've grasped what it is, at least a general idea of ECT. This, I think, everybody should be able to answer. The sequence of administration of medications. So how will you administer medications? Atropine, thiopentane, pentone and succinylcholine. Then scoline, atropine, thiopentone, etracorium, it was not there. The confusion should be between A and D. Because we don't give muscle relaxant the first time. A is the answer. So yes, very good. So most of you were listening. I'm very happy. So with this, we end the lecture. Thank you so much for listening. Any questions, any doubts that you have? Very good afternoon. I'm Dr. Ritika Singh. I'm a senior resident in the Department of Psychiatry. So as you can all see, today's lecture is treatment of psychoneurosis, and basically we will be dealing with psychotherapies and the behavior therapies. Okay. So we'll cover the heading under the following topics. We'll have a brief introduction and overview of treatment approach, and then we'll see what are the different psychotherapies, different behavioral therapy. And there are two therapies in between where I have written cognitive behavioral therapy and dialectical behavior therapy. So they are something जो use तो psychotherapy को करती है, लेकिन इसमें भी behavioral modification होता है. Okay, then conclusion and references. So when we talk about psychoneurosis or neurosis per se, so they are referred to as neurotic disorders, which are a group of psychological conditions characterized by chronic distress, emotional instability, and maladaptive behavior. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट जो लिखी है, विदाउट अ लॉस ऑफ टच विद रियलिटी. अगर आप साइकोसिस की बात करेंगे या साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो उसमें टच ऑफ रियलिटी जो होता है वो खत्म हो जाता है. इसमें वो रियल सेंस रहता है, लेकिन आपका जो स्ट्रेस डीलिंग का तरीका है या फिर जो आपको, जिससे आप लोगों ने मुझे पहले बताया कि इमोशनली जो अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है. Unlike psychotic disorders, psychoneurosis do not involve hallucinations or delusions. अगर आपने कभी schizophrenia पढ़ा होगा, तो आपने कुछ characteristics देखे होंगे उसमें कि patient को delusions होते हैं, hallucinations होते हैं, disorganized behavior हो जाता है बहुत गंदा वाला, बहुत aggression आ जाता है. तो उसके comparison psychosis में ये सब, neurosis में ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती हैं. The affected individual typically maintains insight into their condition. उनको पता होता है कि प्रॉब्लम हो रही है. The only thing is कि वो स्ट्रगल करते हैं अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने में या अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में. कोई बहुत डिस्ट्रेस में है, कोई बहुत एंजाइटी में है, उसे पता चल रहा है मैं एंग्शियस हूँ, लेकिन वो एंजाइटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि सपोज वो कहीं जा नहीं पा रहा है, तो वो बिहेवियर उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. सो अगर हम क्लासिफाई करते हैं मेंटल इलनेस को, तो उसमें अगर आप देखेंगे न्यूरोसिस की बात करें तो उसमें ये सारी चीजें आ रही है. एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ओसीडी आ रहा है, फोबिया आ रहा है, हिस्टीरिया आ रहा है. ठीक है. सिमिलरली वाइडर एस्पेक्ट देखें तो टाइप्स ऑफ न्यूरोटिक इलनेस क्या क्या है? फोबिया, एंजाइटी, न्यूरेस्थीनिया, ओसीडी. सॉरी, दिस सम ऑफ द स्लाइड्स हैव बीन आगे बढ़ गई हैं. ये सब चीजें होती हैं. ठीक है. तो कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर हम देखें इन साइकोटिक जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो पर्सिस्टेंस एंजाइटी और वरी आपको मिलेगा. किसी किसी में इरेशनल फियर या फोबियाज होंगे. सोशल फोबियाज की बात करें, ओसीडी की अगर बात करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स आपको मिलेंगे.
लो मूड होगा, इरिटेबिलिटी ऑफ मूड हो सकता है बट नॉट टू द एक्सटेंट की जो आप मूड डिसऑर्डर्स में देखते हैं। फटीग एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सोमैटिक कंप्लेन जैसे कि हेडेक है, स्टमक इश्यूज हैं, बॉडी पेन है, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस। ठीक है, तो हाउ डज इट इम्पैक्ट योर डेली लाइफ? जो भी न्यूरोटिक सिम्टम्स होते हैं, अगर कोई इंसान लगातार परेशान है, किसी स्ट्रेस में है, तो उसका डे टू डे एकेडमिक, अगर आप लोग के स्टूडेंट्स है जैसे, तो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज हैम्पर होगी, जो जॉब में जा रहा है उसका काम हैम्पर होगा, आप अपने फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपका प्रोफेशनल, एकेडमिक, पर्सनल, सोशल सभी तरीके की लाइफ अफेक्ट होगी अगर न्यूरोटिक इलनेस ज्यादा बढ़ जाती है तो। ठीक है, impaired work and academic performance, strained interpersonal relationships, avoidance of social or challenging situations, reduced self-confidence and self-esteem. Increased dependence on other. अगर किसी को ज्यादा, जैसे अगर आपने देखा होगा कोई ज्यादा एंशियस रहता है या किसी को किसी जगह का फोबिया होता है, तो वो अपने साथ वालों को भी इन्वॉल्व कर लेता है कि नहीं तुम मेरे साथ चलो ही चलो, मैं नहीं जा सकता अकेले, मुझे ये चीज बहुत परेशान कर रही है, तुमको भी ये करना पड़ेगा। ठीक है, ओसीडी वाला पेशेंट होता है तो अपना तो हाथ धोएगा ही, कि दूसरे इंसान है तो उसको भी बोलेगा नहीं तुम यहाँ पे तुमने ये टेस्ट किया तो तुम मेरे पास अब हाथ धो के ही आओ। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि दूसरों पर भी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेकेंडरी इश्यूज, एंजाइटी की वजह से बहुत बार लोग सब्सटेंस यूज में चले जाते हैं, बहुत बार लोग सेकेंडरी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी आती हैं। क्रॉनिक इमोशनल डिस्ट्रेस आपका ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, हार्ट कंडीशन, बीपी, क्या बोलते हैं, डायबिटीज, ये सारी चीजें भी एंजाइटी के साथ कोरिलेटेड देखी गई है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ओवरव्यू, एक मेन जो टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच का क्या होगा। सो इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। एक, हर इंसान अलग है, ठीक है, अगर सपोज आपको न्यूरोटिक सिम्टम है तो शायद आपके लक्षण अलग हों और आपके लक्षण अलग, आपके पर्सनालिटी ट्रेट अलग हों चीज़ों को डील करने के लिए, उसके कंपैरिजन दूसरा इंसान जो है उसके अलग हो, तो उनको ध्यान में रख के ट्रीटमेंट किया जाता है कि किसको कौन सी थेरेपी यूज कर सकते हैं, किसके साथ कितना पेशेंटली डील करना है, तो ये सारी चीजें हम ट्रीटमेंट अप्रोच में देखेंगे। and individualized approach is symptoms and underlying causes may vary among individuals. गोल क्या है, जस्ट सिम्टम रिलीफ नहीं है, ठीक है, सिम्टम तो रिलीफ करना है, इसके साथ साथ क्या क्या है, आपकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है लाइफ की वो ठीक करनी है, आपको एकेडमिकली, ऑक्यूपेशनल वाइज, पर्सनल रिलेशनशिप सबको ठीक करना है, और अगर आगे के फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो उसको कैसे पॉजिटिव कोपिंग के वाया हैंडल करना है। So this is everything which we are going to learn. Okay. So what are the key points you should consider while treating psychoneurosis? Individualized assessment. Each patient can present with a unique combination of symptom, personality trait, and life circumstances. Then establishing therapeutic alliance, building trust, rapport with the patient. ठीक है, कहीं और किसी चीज में उसको आपके अलावा, मतलब उसको थेरेपी के अलावा, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अलावा किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग योगा नेचुरोपैथी में बहुत बार पेशेंट्स को रेफर करते हैं, तो क्या उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वहां से सीखनी है, फिजियोथेरेपी की जरूरत तो नहीं, तो ये सब चीजें आपको एक साथ लेके चलनी है। देन सिम्टम सिवियरिटी एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट देखना है, जितना सिवियर है उसका ट्रीटमेंट उतना आप विग्रेसली करेंगे और उसमें इतना टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट की पेशेंट का इंसाइट कितना है, पेशेंट मोटिवेटेड कितना है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मोटिवेशन अच्छा होता है कि दे आर विलिंग टू वर्क ऑन थेरेपी जो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जिन पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिनको हो सकता है आपको दवाइयाँ देनी पड़े थेरेपी से पहले, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देनी है। देन चूजिंग द राइट थेरेपेटिक अप्रोच, कि कौन सी थेरेपी किस पेशेंट को सूट कर रही है। जैसे हम एंजाइटी के लिए सीबीटी यूज करते हैं और ओसीडी के लिए सीबीटी का ही आपका बिहेवियर, मतलब बिहेवियरल थेरेपी का एक मॉडिफिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है ईआर पे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए हम साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी करते हैं। बिहेवियरल मैनेजमेंट है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसमें हम डीबीटी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन आपको मॉनिटर करना है पेशेंट का प्रोग्रेस और वो ट्रीटमेंट को कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उसी हिसाब से आपको अपना ट्रीटमेंट भी एडजस्ट करते रहना है। फिर आपको एड्रेस करना है कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं तो नहीं है, कोई पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, चलो आपने थेरेपी की, लेकिन साथ साथ उसमें सब्सटेंस यूज भी है, अल्कोहल यूज भी है या फिर कोई और सब्सटेंस यूज है, तो उसको भी ट्रीट करना है। ठीक है,
और फैमिली और सोशल सपोर्ट, क्योंकि उनको भी समझाना है कि कैसे पेशेंट को डील करना, और ये भी देखना है कि कहीं सोशल या फैमिली कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं जिसकी वजह से सिम्टम एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो यू हैव टू एड्रेस होल थिंग अगर हम साइकोथेरेपीज की बात करते हैं तो। अब हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज देखेंगे। जो मेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज आज हम पढ़ेंगे वो है साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपीज, विल सी आफ्टर देम। उसके बाद आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है, और एक होता है मल्टी मोडल अप्रोच, यानी कि कंबाइंड ट्रीटमेंट, जिसमें हम साइकोथेरेपी भी यूज कर सकते हैं, हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी साथ में यूज करते हैं। तो जिस कंबाइंड ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स साइकोथेरेपीज। Psychotherapy is a structured, goal-oriented psychological treatment that involves communication between a trained therapist and a patient to alleviate psychological distress and modify maladaptive behavior and thought pattern. ठीक है? It is also called as talk therapy and it is often confused with counseling. तो ये चीज बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी, आप बोलेंगे पेशेंट को काउंसलिंग के लिए भेज दो। ठीक है, काउंसलिंग अलग चीज होती है, थेरेपी अलग चीज होती है। प्लीज इसको बहुत बार इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, बट अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यू ऑल आर मेडिकोस, तो कि इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, जो साइकोथेरेपी है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है, उसमें पता होता है कि पहले क्या टाइम टेबल बना होता है कि ये चीज पे काम करना है, इस चीज पे ऐसे काम करना है, हमें इस प्रॉब्लम को इतने आवर्स देने हैं, इसमें ये होमवर्क दिया जाएगा, पेशेंट का ये रिस्पॉन्स देखा जाएगा। ठीक है, और इसमें एक ट्रेन थेरेपिस्ट होगा। ठीक है, वो काम करेगा पेशेंट का जो माल अडेप्टिव थॉट पैटर्न है, कोई कॉग्निटिव जो कोपिंग स्किल्स हैं, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, उस पर कैसे काम करना है। ठीक है, बस एक जस्ट आपका डिफरेंस देखिए, जो काउंसलिंग है इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस इन कंपैरिजन टू साइकोथेरेपी। ये जो होता है आपका काउंसलिंग जो है वो उसी वक्त पेशेंट के जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें कितना हैम्पर हो रहा है उस पर ज्यादा काम करता है, वेयर एज जो आपका साइकोथेरेपी है वो अंडरलाइन डीप कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पे देखेगा और ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, counseling deals with patients who are fit enough to think rationally and find solution to their problem by themselves, whereas psychotherapy involves individuals who are dependent on psychotherapists to gain control over their personality, mind and emotional behavior. All right. So goals क्या है साइकोथेरेपी के, चाहे बिहेवियर थेरेपी हो चाहे साइकोथेरेपी, उनके गोल्स क्या है जो हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। एक तो कि इंसाइट डेवलप करना पेशेंट के अंदर अपने इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न को लेके, resolve internal conflicts, improve interpersonal relationship, improve self-esteem, modify maladaptive thought pattern, एक positive coping, healthy coping behavior inculcate करना, और जो भी इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो सिम्टम है एंजाइटी के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी। ठीक है, तो ये थेरेपी अगर हम बात करें तो ये बहुत पुरानी है। सिगमंड फ्रॉइड ने अपने इज दी वन जिन्होंने ये डेवलप किया था, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बात करके उसके जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसके ऊपर काम किया जाता है बाय फाइंडिंग आउट कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कि थॉट पैटर्न कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, कोई अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज जो मन में दबी हुई है बाहर नहीं आ पा रही है, किस वजह से पेशेंट अगर कोई भी बुरा बिहेव कर रहा है पेशेंट तो वो किस रीजन की वजह से कर रहा है। ठीक है, that helps people understand their deep hidden thoughts and feelings, especially those from childhood that might be causing problem in their current life. ठीक है, तो इसका कोर आइडिया क्या है कि अवर इमोशनल स्ट्रगल्स कम फ्रॉम अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब भी हम कोई चीज करना चाहे, हमारा एक डिजायर्ड गोल है, हम उसको उस तक पहुंच नहीं जाता है, या फिर हमको दो क्या बोलते हैं जो दो अपोजिट चीज हमारे दिमाग में टकरा रही है। आपको एक ए जगह पे जाना है लेकिन वहां जाने के लिए आपको बहुत टाइम लग रहा है, आपके पैसे भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि मैं जाना ज्यादा जरूरी है कि पैसे बचाना ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट कॉज करती है। ठीक है, तो कोई ऑपोजिट चीजों की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से नहीं है तो नहीं है, और वो बहुत डीप रूटेड अनकॉन्शियसली आपके अंदर होता है, जिस बहुत सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हैं। चलो मुझे बचपन में मारा था मेरे घर वालों ने बहुत, अरे वो तो सबकी पिटाई होती है, ये सोच के आपने शायद एक बात इग्नोर कर दी, लेकिन आगे जाके क्या पता वो चीज आपके बिहेवियर में झलक रहा है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे साइको एनालिसिस काम करती है। ठीक है, गोल क्या है,
to bring unconscious thoughts into awareness so you can understand yourself better. जो चीज आप इग्नोर कर रहे थे उस चीज को एक्नॉलेज करना है, ठीक है। लंबा सेशन चलता है, ठीक है, 4 से 5 सेशन हर हफ्ते होते हैं, 45 मिनट्स टू 1 आवर, कभी कभी 1.5 आवर भी लग जाता है, ठीक है। कुछ टेक्निक्स हैं, एक तो है फ्री एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट बोलने को बोलते हैं, ठीक है, पेशेंट स्पीक फ्रीली टू अंडरकवर रिप्रेस्ड थॉट्स। फिर है ड्रीम एनालिसिस, पेशेंट को कोई सपने परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत बार कहते हैं ड्रीम्स आर रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। आपके जो अनकॉन्शियस ब्रेन में चल रहा है वो ड्रीम में मैनिफेस्ट होता है। तो देयर इज अ बुक सिगमंड फ्रॉइड की, तो उसमें यही बताया गया है कि ड्रीम में आपको जो जो चीज दिख रहा है उसका क्या मतलब है। अगर ड्रीम में आपको कभी लग रहा है कि कोई आप पे अटैक कर रहा है, कोई शेर है, तो आपका बॉस हो सकता है, इस टाइप की चीज, ठीक है ना। तीसरा है ट्रांसफरेंस इंटरप्रिटेशन। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है जो आपका जो थेरेपिस्ट है, जो पेशेंट है, उसका थेरेपिस्ट की तरफ क्या इमोशनल बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफरेंस इसे बोलते हैं। हो सकता है एक पेशेंट को कोई मेल थेरेपिस्ट मिला हो, बट पेशेंट का हिस्ट्री रहा है कि इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा मेल्स की वजह से, तो वो ट्रांसफरेंस उस थेरेपिस्ट के ऊपर भी झलक सकता है कि थेरेपिस्ट तो मेल है, ये खराब ही होगा, ठीक है। वैसे ही उल्टा भी हो सकता है, मेल फीमेल के लिए भी ऐसा सोच सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यही चीजें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप टू द थेरेपिस्ट। और इसी का एक टर्म होता है काउंटर ट्रांसफरेंस, जो इमोशनल या बिहेवियरल फीलिंग्स थेरेपिस्ट की अपनी पेशेंट की तरफ आती है, ठीक है। चौथा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत बार पेशेंट ना अनकॉन्शियसली अवॉइड करता है जो चीज पेनफुल होती है उसको याद करने के लिए, तो उस रेजिस्टेंस को डील करना है। तो पेशेंट माइट गेट इरिटेबल, माइट गेट एंग्री, अगर आप कुछ ऐसी बात करो जो उसको बाहर ही नहीं निकालनी है, तो उसको विद टाइम कैसे एक्सप्लोर करना है, ये साइको एनालिटिक थेरेपी आपको बताती है। Person unconsciously avoids talking about certain thoughts, memories or feeling during therapy, especially those are painful or threatening, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, फ्लाई कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल चाहिए, फॉल कर रहे हैं तो आप किसी परेशानी वाली सिचुएशन में हैं, ठीक है ना। ड्रामेटिक चेंज, अगर आपके लाइफ किसी के पेशेंट को डेथ दिख रही है तो उसका मतलब हो सकता है कोई सडन चेंज हो गया लाइफ को जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका साइको डायनेमिक साइकोथेरेपी। साइको एनालिटिक जैसी ही है, उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, और उसमें पता होता है कि हमको इस वाले एक्सपीरियंस पे काम करना है, इस इमोशन को कंट्रोल करना है, और कंपैरेटिवली छोटा होता है, टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है और सेशन भी कम होता है, ठीक है। More practical and structured, influence on past experience on present behavior, emotional insight and unresolved conflicts, patterns in relationship and behavior. Nature, it is usually short to medium term, weeks to months, sessions are once or twice a week. गोल क्या है कि आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना है, इमोशनल रूट्स मतलब जो रूट ऑफ प्रॉब्लम है उस तक जाना है, improve relationship and develop healthy coping mechanism, similar to that of आपका psychoanalytic. तीसरी आ गई आपकी सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ठीक है। सपोर्टिव साइकोथेरेपी, जिसे नाम समझ रहे हो सपोर्टिव, तो ये उसी वक्त अगर कोई क्राइसिस कंडीशन है उस टाइम पे आपको क्या सपोर्ट देना है पेशेंट को या ग्रुप ऑफ पीपल को, उस पे डील करती है। ये पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, अनरिजॉल्व ट्रॉमा पे उतना डील नहीं करेगी, ये करंट सिनेरियो को कैसे मैनेज करना है, वहां पे कैसे पॉजिटिव कोपिंग लगानी है, वहां पे अपने आप को कैसे रिलैक्स करना है, उस पे काम करती है, ठीक है। It is a practical, present-focused approach that helps individual cope with emotional distress, strengthen defense, and maintain psychological stability. Unlike other forms of therapy, it does not aim to explore unconscious conflicts, but instead focus on support, reassurance, and problem solving. ठीक है? डिस्ट्रेस एंजाइटी कम करेगा, कोपिंग स्किल बढ़ाएगा, सिखाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, enhance daily functioning and provide emotional support during crisis. इंडिकेशन क्या है, अगर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है, बहुत सारे क्रॉनिक मेंटल इलनेस या क्रॉनिक फिजिकल इलनेस भी है, अगर किसी को लॉन्ग लॉन्ग केस ऑफ डायबिटीज अगर भी है, तो उसमें कैसे अपने एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इलनेस चेंज को बना के रखना है, तो ये आपका काम करती है थेरेपी उसमें, ठीक है। यूज्ड टू बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्पेशली बिफोर मूविंग टू डीपर टाइप्स ऑफ थेरेपी. Suitable for those who just want relief from symptom but do not have any insight and have limited motivation. A good option when time, money or resources don't allow for long term management. ठीक है.
टेक्निक्स क्या है इसमें, कुछ चीजें देख लीजिए। गाइडेंस, पहले तो गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन इश्यूज लाइक वर्क, स्टडीज, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। जिस भी टॉपिक को या जिस भी क्राइसिस सिचुएशन को आपको डील करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर पेशेंट को टेंशन रिड्यूस करने के मेथड, अपने आप को काम कैसे करना है, इसके ऊपर टेक्निक सिखानी है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कभी कभी एनवायरमेंट किसी, जैसे सपोज कहीं डिजास्टर हो गया, पेशेंट को उस जगह से उठा के दूसरी जगह पे भेज दो, पेशेंट वैसे ही काम हो जाता है बहुत बार। यहाँ पे बिल्डिंग गिर जाएगी तो आपको अगर मैं दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दूंगी तो यू विल बी काम बाय योरसेल्फ, आप एक सेफ्टी की जगह पे पहुंच गए। तो चेंजिंग और इम्प्रूविंग द पर्सन सराउंडिंग इफ द सिचुएशन इज कॉजिंग इमोशनल प्रॉब्लम। कभी कभी फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो पेशेंट बहुत बार फैमिली से थोड़ा दूर चला जाता है तो बेटर फील करता है। Externalization of interest, encouraging the person to return to hobbies or meaningful activities once they enjoy. Reassurance देना है कि उनको fear ना आए, उनके जो self confidence है वो boost हो। और prestige suggestion, therapists give advice with confidence and authority to guide patients action. कहीं कहीं पे पेशेंट को परसुएट करना पड़ता है कि आप ये काम अच्छा है इसको करो, कहीं कहीं पे प्रेशर या अपनी अथॉरिटी दिखानी पड़ती है। पेशेंट के लिए को बुली नहीं करना है, पेशेंट के लिए रूड नहीं होना है, बट कहीं कहीं पे आपको जहाँ पे जरूरी है फर्मली एक्शन लेना पड़ता है। कन्फेशन एंड वेंटिलेशन, अलाउइंग पर्सन टू फ्रीली एक्सप्रेस इमोशन एंड फील रिलीफ बाय थिंकिंग इट आउट लाउड। ओके, नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल थेरेपी। आईपीटी में क्या होता है, नाम है कि इंटरपर्सनल, कोई भी इंटरपर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो अपने साथ हो या किसी और की क्लोज फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप के इश्यूज हो, उस पर काम करना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्ड थेरेपी which focuses on improving person's relationship and social functioning to reduce emotional distress। ठीक है, बहुत बार लोगों के साथ कैसा रिलेशन है उसकी वजह से भी इमोशनल डिस्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, पेरेंट्स की नहीं बन रही है, मेरी पेरेंट्स से नहीं बनती, मेरे दोस्तों से नहीं बनती, मैरिज में ट्रबल है तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सब चीजें में आईपीटी काम करती है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिप्रेशन एंड अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स आर क्लोजली लिंक्ड टू इंटरपर्सनल इश्यूज। ये इसका वही इंडिकेशन जैसे ग्रीफ है, कुछ लॉस हो गया, कोई डिप्रेशन है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन है, ईटिंग डिसऑर्डर और एंजाइटी में भी काम करते हैं। इसके तीन सेशंस फेजेस होते हैं, इनिशियल फेज, मिडिल फेज और टर्मिनेशन फेज। ठीक है, पहले के 3-4 जो सेशन होते हैं उसमें आपका क्या बोलोगे, इनिशियल फेज में आप डायग्नोसिस बनाओगे, सिम्टम आइडेंटिफाई करोगे, फिर आपका कोई मेजर जो सिम्टम किस वजह से आ रहा है, कोई लाइफ इवेंट तो नहीं हुआ है, कोई मेजर चेंज इन लाइफ स्ट्रक्चर तो नहीं आया है, कोई रिलेशनशिप ट्रबल तो नहीं है, कोई फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, किस वजह से कोई इंटरपर्सनल प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, फिर आप 1 से 2 इंटरपर्सनल प्रॉब्लम एरिया सेलेक्ट करोगे, सच एज ग्रीफ है, रोल डिस्प्यूट्स है, रोल ट्रांजिशन है, कि कुछ इंटरपर्सनल डेफिसिट्स चल रही हैं, उसको चूज करोगे। फिर जो नेक्स्ट सेशन है इट इज द एक्टिव फेज, जहाँ पे आपने काम करना है, जहाँ पे आपने कोपिंग सीखनी है, पेशेंट को काउंसिल करना है। ठीक है, improve communication and social skill, develop new coping strategies, use technique like low role play, clarification and emotional expression, and will be tracking the symptom improvement कि पहले कैसा बिहेव करता था पेशेंट और अब कैसा बिहेव कर रहा है। देन टर्मिनेशन फेज, यहाँ पे आपको जब क्लोजर करना होता है थेरेपी का, लास्ट के जो आपके 2-4 सेशन है, यहाँ पे आपका पेशेंट का मूड कितना इंप्रूव हुआ है, उसका रिलेशनशिप विद सेल्फ और अदर्स कितना इंप्रूव हुआ है, और आपको पेशेंट को एनोनिमिटी देनी है कि अब आप पेशेंट को अथॉरिटी बनाना है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वो अपने इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम है वो कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है। डिस्कस हाउ टू हैंडल फ्यूचर प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोर फीलिंग अबाउट एंडिंग थेरेपी एंड एनकरेज इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ आपके आ गई इनसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। इसमें क्या होता है, नाम से आप इनसाइट डेवलप की जाती है, चाहे वो खुद के बिहेवियर के लिए हो या खुद की बीमारी के लिए हो। ठीक है, it helps individual understand deep rooted emotional conflict and unconscious patterns from past experience to improve current thoughts, feelings and behavior, increase self awareness, gently highlight contradictions of the client's thinking, promote emotional healing and personal growth। ठीक है, फिर एक सब पार्ट है फैमिली साइकोथेरेपी में, क्या होता है कि आपकी जो फैमिलियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर थेरेपी करनी है, और मैरिटल साइकोथेरेपी, इसको हम कपल थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, इट अंडरस्टैंड हेल्प अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमने बेसिक बेसिक साइकोथेरेपीज जो होती हैं हमने उसे कवर किया। अभी जो आगे की 2-3 थेरेपीज हैं उसको अच्छे से देख लेना, स्पेशली सीबीटी को अच्छे से देख लेना, वो सब जगह पूछते हैं, सब जगह आती भी है।
ग्रुप साइकोथेरेपी, जो साइकोथेरेपी आप इंडिविजुअल्स पर कर रहे थे उसी को ग्रुप में कंसिडर किया है, ठीक है। ये आपका सोशल कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो अगर कम्युनिटी वाइज प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन कॉन्फ्लिक्ट शेयर कर सकते तो उसको कैसे डील करना है उस पर हेल्प करेगी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। ये आपका है तो पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी, जो कि आपके थॉट पैटर्न पे काम करते हैं, बट यहाँ पे हम बिहेवियरल टेक्निक्स यूज करते हैं टू मॉडिफाई द बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिस्टॉर्टेड थिंकिंग लीड्स टू इमोशनल डिस्ट्रेस। इफ यू रिमेंबर, जब हमने साइकोन्यूरोसिस वाला पार्ट पढ़ा था, इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बताए थे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ चीजें होती है कि पेशेंट की कैसे नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और कि ये या तो ये सही है या तो ये गलत ही है, बीच का रास्ता ही नहीं दिखता है। तो इन सब चीजों पे काम करती है सीबीटी। इट एम्स टू चेंज बोथ थॉट्स एंड बिहेवियर टू इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग। इंडिकेशन किस में है? डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ओसीडी, स्ट्रेस, जितने भी आप न्यूरोटिक कंडीशन सोच सकते हो, ईटिंग डिसऑर्डर्स में। तो अगर हम बात करें, एरनटी बेक ने एक कॉग्निटिव ट्रायड दिया था जिसको हम ट्रिपल एच बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ, नेगेटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर। हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस लगता है, ठीक है, पेशेंट को। ये आपका एबीसी मॉडल यूज करता है कि हमारा कोई भी इवेंट हुआ, एक्टिवेटिंग इवेंट, और हम क्या चले जाते हैं सी पे, कॉन्सिक्वेंसेस। किसी ने बोला कि मेरे से उसने गलत तरीके से बात करी है तो मुझे गुस्सा, मैंने मार दिया, ठीक है। किसी को कि गुस्सा आया, मैंने मार दिया। हम बीच का जो बी वाला पार्ट है ना, जो हमारा बिहेवियर है, जो बिलीफ है, उसको हम खा जाते हैं कि वो क्यों आया, गुस्से की वजह से हमारे अंदर क्या बिलीफ आए, हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, जिस वजह से हमने सी कॉन्सिक्वेंसेस किया, ठीक है। तो वो बी पे काम करना है, ठीक है। ए रिप्रेजेंट एंटीसीडेंट इवेंट, बी रिप्रेजेंट बिलीफ विच एम्फासिस हाउ यू परसीव एंड अंडरस्टैंड द गिवन सिचुएशन। तुमको लगा कि उसे तुम पे अटैक किया है, हो सकता है वो इंसान पहले से परेशान हो, उसको किसी ने डांटा हो, इस वजह से उसका बिहेवियर चेंज रहा हो, ठीक है। हो सकता है वो किसी और पे गुस्सा कर रहा हो, आप गलती से बीच में आ गए हो। तो ये सब चीजें हमको कंसिडर कराता है ये सीबीटी का जो पार्ट है, ठीक है। सिचुएशन आई, थॉट आया, आपका इमोशन आ गया और आपका बिहेवियर आ गया। बहुत बार आप बॉडीली सेंसेशन भी होता है कि बहुत बार आपको जब गुस्सा या चिड़चिड़ापन होता है तो आप देखते हो आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, आपको ट्रेमलेस होने लगती है, आप पसीना ज्यादा होने लगते हो। तो कैसे अपने आप का, बहुत बार बॉडीली सेंसेशन को काम करके भी आप अपने देखोगे कि एंजाइटी की फीलिंग कम हो रही है। Identify the negative thoughts, cognitive distortion, challenge and replace them with realistic thoughts, जैसे मैंने बताया अभी आपको जो बी वाला पार्ट है। Behavioral modification and exposure exercises, and इसमें होमवर्क असाइनमेंट दिया जाता है। पेशेंट को कुछ कुछ काम करने को बोलेगा थेरेपिस्ट कि आप आज ये लिस्ट बना के आइए, आज आप एक जर्नलिंग करिए और मुझे बताइए कि आपने पर्टिकुलर थॉट के बारे में क्या क्या चीजें लिखी हैं। आपको अगर गुस्सा जिस वक्त आया था तो आप उससे पहले क्या होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, कितनी देर तक गुस्सा रहता है। तो ये सब चीजें जर्नल करने को पेशेंट को बोल सकता है। या फिर ये होमवर्क दे सकता है, नेक्स्ट टाइम अब कभी भी गुस्सा आए तो आप उस वक्त बोलने से पहले आप 10 मिनट रुकेंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद ही किसी से बात करेंगे। तो ये भी आपका एक होमवर्क टेक्निक हो सकती है, ठीक है। और पेशेंट कैसे फॉलो कर रहा है, ये बस आपका एक वो है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि थेरेपी कैसे कंडक्ट की जाती है, ठीक है। सीबीटी का ही एक और पार्ट आ गया, आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एल्बर्ट एलिस ने बोला था। इसने बोला था इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग आइडेंटिफाइंग चैलेंज एंड इरेशनल बिलीफ व्हिच लीड टू इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। है वही, ठीक है, जो पहले देखा था। इसमें आपका इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम को कैसे, जो प्रॉब्लम है उसको चैलेंज कैसे करना है और फिर अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, ठीक है। तो रैशनल बिलीफ को, जो इरेशनल बिलीफ है उसको कैसे रैशनल बिलीफ से रिप्लेस करना है, कैसे लॉजिकली थिंक करना है और इमोशनल डिस्ट्रेस कम करना है। उसमें आपका एबीसी मॉडल था, इसमें एबीसीडी ई मॉडल है, ठीक है। ए तो एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, बी बिलीफ हो गया, सी कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। यहाँ पे डी वाला क्या है कि जो आपका इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज है उसको चैलेंज करना है, जो बिलीफ को चैलेंज करके उन इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज को कैसे कंट्रोल करना है, और इफेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चैलेंजिंग सेल्फ एंड डिफीटिंग बिलीफ। और ये ई जो है, अगर आपने कुछ जो नेगेटिव डिस्टॉर्शन था उसको चैलेंज किया, जो भी इमोशनल रिएक्टिविटी थी उसको चैलेंज करके आपको देखना कि इफेक्ट क्या आया,
आपको इस इफेक्ट, जैसे कि सपोज आपने अपने गुस्से का या फिर जो भी गलत कॉग्निटिव वो आ रहा था कि मेरे को गुस्सा उसके बिहेवियर की वजह से आ रहा है, फिर आपने सोचा नहीं मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है शायद क्योंकि मैंने आज खाना ही नहीं खाया है, शायद मैं घर से बहुत देर से चल के आ रहा हूँ, इतनी गर्मी हो रही है तो मुझे सामने वाले की नहीं गर्मी की वजह से गुस्सा आ रहा है। आपने उसको चैलेंज किया तो आपने देखा कि चलो मैं 10 मिनट पंखे के नीचे बैठ जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ, तो आपने देखा आपका गुस्सा चला गया। ठीक है, तो ये इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज जब आपने अपने उस बिलीफ को चैलेंज किया कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है, समझ रहे हैं ना, आपने एक लॉजिकल और एक रैशनल रीजन दिया अपने किसी भी बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट इज डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, ये मार्शा लिनेन ने डिस्कवर की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए। आप लोगों की पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अगर क्लास हुई होगी, आपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर पढ़ा होगा, तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक होता है जिसमें आप इमोशनली पेशेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच हो जाता है और वो चीज़ें अगर कम हो तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर वो चीज़ें उससे दूर चली जाएं तो उनको उसके लिए कैसे हम ये डीबीटी का यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, द टर्म डायलेक्टिकल मीनिंग मीन्स फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड चेंज। ठीक है, यानी कि कोई भी चेंज हुआ अचानक से, कोई आपसे कोई चीज़ आपको बहुत अटैच थी वो अचानक से आपसे चले गई, तो कैसे एक्सेप्ट करना है उस चेंज को, कि अगर किसी चीज़ का दूर जाना है, किसी चीज़ का बदलाव आना, कोई चीज़ हम बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा ही होगा, वो नहीं हुई, तो कैसे उस चेंज को एक्सेप्ट करना, ये आपको डीबीटी सिखाता है कि अपने आप को कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में शांत रखना है। ठीक है, अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत बार बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के पेशेंट्स अगर इमोशनली बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो सेल्फ हार्म कर लेते हैं। ठीक है, कभी खुद को काट लिया या सर पे मार लिया, तो ये बिहेवियर कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को, ये डीबीटी सिखाता है। ठीक है, it combines CBT with mindfulness, acceptance and emotional regulation strategies. तो मेन कंपोनेंट क्या है, या तो इंडिविजुअल पेशेंट को थेरेपी दे सकते हैं वन वन सेशन, ग्रुप थेरेपी के खूब सारे लोगों को बिठा के डीबीटी स्किल ट्रेनिंग करनी है। फोन में अगर पेशेंट को अचानक से क्राइसिस आ गया तो फोन में भी पेशेंट की ब्रीफ काउंसलिंग सेशन किया जा सकता है। एंड थेरेपिस्ट की पूरी कंसल्टेशन टीम होती है जो पेशेंट के हर एक अलग अलग पार्ट पे काम करेगी। ठीक है, और कोर एरिया क्या है, जैसे मैंने बोला माइंडफुलनेस, बीइंग प्रेजेंट एंड बीइंग अवेयर इन द मोमेंट। ठीक है, आपको दुख हो रहा है, कभी कभी पेशेंट को बहुत ग्रीफ होता है, बहुत रोना आता है, बहुत सैड होता है, तो उसको भी वो एंगर की तरह पेशेंट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो माइंडफुलनेस सिखाता है अपने उस फीलिंग के लिए टोटली अवेयर रहना। ठीक है, मैं परेशान हूँ, क्यों परेशान हूँ, बिकॉज मुझे बहुत दुख है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना कि मैं पूरा मुझे दुख हो रहा है, कि मैं सैड हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा है डिस्ट्रेस टॉलरेंस, मैनेजिंग क्राइसिस विदाउट मेकिंग सिचुएशन वर्स। ठीक है, बहुत पेशेंट्स का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होता है। ठीक है, किसी को आपने थोड़ा सा कुछ बोला वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, किसी को आप 3-4 बार समझाते तो पेशेंट अच्छे से समझ जाता है। तो उसके लिए जो डिस्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे कि उसकी चेंज कर लोकेशन चेंज हो गई, तो उस लोकेशन जो चेंज हुई है उसको कैसे टॉलरेट करना है। ठीक है, गुस्सा करने से बेहतर है बैठ जाओ। ठीक है, वो जो वहीं पे जो माइंडफुलनेस वाली थेरेपी है, जो रिलैक्सेशन वाली थेरेपी है, वो काम आएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इंटेंस इमोशन, जिसको इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चौथा है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेटिंग असर्टिवली। ठीक है, ये सब चीजें देख ली हमने कि इंडिविजुअल थेरेपी के आपका अप्रोक्सीमेटली 1 आवर होती है, स्किल ट्रेनिंग होती है वीकली 1.5 to 2.5 आवर, थेरेपिस्ट कंसल्टेशन टीम वीकली अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स, और फोन कोचिंग। माइंडफुलनेस का मतलब है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट्स, इमोशनल रेगुलेशन, चेंजिंग अनवांटेड इमोशन। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रेस टॉलरेंस और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, इंप्रूविंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड सेल्फ रिस्पेक्ट साथ में। ठीक है, सीबीटी और डीबीटी में आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस क्या है, वी कैन सी इट लेटर ऑन, आई विल जस्ट थोड़ा तेज चलेंगे। अभी यहाँ तक हमने साइकोथेरेपी, सीबीटी और डीबीटी पढ़ी है। अब बची भी बिहेवियरल थेरेपी अपार्ट फ्रॉम सीबीटी एंड डीबीटी जो है वो हम देखेंगे। इसमें आप ये याद रखिए, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो हमारा बिहेवियर है वो एक लर्निंग प्रिंसिपल के वाया आया है। ठीक है, हमने कुछ कुछ चीजें सीख ली होती हैं, चाहे वो बचपन से अभी तक सीखी हो या फिर अपनी एंजाइटी कम करने के लिए सीखी हो, तो जो लर्निंग जो उसकी वजह से जो हमारा बिहेवियर आ गया उसको कैसे अनलर्न करना है, ये बिहेवियर थेरेपी बताती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओसीडी वाले पेशेंट में क्या होता है, एंजाइटी हुई, सपोज कंटामिनेशन को लेके एंजाइटी हुई,
उसने फटाक से हाथ धोए, उसकी एंजाइटी कम हो गई। तो उसके दिमाग ने क्या सोच लिया, याद कर ले जब भी एंजाइटी है उसके साथ हाथ धोना है तो एंजाइटी कम हो जाएगी। पहले तो ये थोड़ा सा टाइम के लिए एंजाइटी कम कर रही थी, फिर ये आदत बन जाएगी, ठीक है, और बार बार फिर यही साइकिल होती रहेगी। तो हमको सबसे पहले वो हाथ धोने वाला जो बिहेवियर है वो तोड़ना होता है, ठीक है। They aims to help individual change unwanted or maladaptive behavior by using technique based on principles of learning theory such as classical conditioning and operant conditioning. If you all remember classical conditioning, पैवलो के एक डॉग का एक्सपेरिमेंट था, घंटी बजाते थे तो पेशेंट को क्या बोलते हैं, तो जो डॉग था उसको सलाइवा नहीं होता था, लेकिन फिर आपने क्या किया, घंटी और खाने को साथ में रखना शुरू किया पैवलो ने, तो फिर डॉग का सलाइवा निकलने लग गया। फिर बाद में क्या हुआ कि उसने खाना हटा दिया, सिर्फ घंटी से भी डॉग का सलाइवा निकलने लग गया, तो वो कंडीशन हो गया, ठीक है ना, कि अब घंटी की कंडीशनिंग हो गई है सलाइवा निकलने से। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है कि जो हमारी कंडीशन हो जाती है, जैसे कि हाथ धोना, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। Unlike traditional psychotherapy, behavioral therapy is action oriented and focus on present behavior rather than, इसमें भी वही है कि आपका जो current behavior है उसको कैसे resolve करना है rather than जो conflict है, ठीक है। तो इसका मेन इंडिकेशन आपका एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, फोबियाज, डिप्रेशन, सब्सटेंस यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, बच्चों में एडीएचडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी काम आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग, ईआरपी, वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर, एवर्जन, टोकन इकोनॉमी, कंटिजेंसी मैनेजमेंट, बिहेवियरल एक्टिवेशन, मॉडलिंग एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग। हम ब्रीफ में सब देखेंगे एक एक करके, ठीक है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, पेशेंट को, जो फोबिया के पेशेंट है उनको ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता है जिन भी चीजों से उनको फोबिया होता है, ठीक है। 3-4 स्टेप्स होते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी होती है पेशेंट को, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया या फिर जेपीएमआर हो गया कि मसल्स रिलैक्सेशन कैसे सीखना है, उसको सिखाया जाता है। जब भी एंजाइटी हो आप इन सब चीजों को टेक्निक करेंगे, यूज करेंगे अपने आप को काम डाउन करने के लिए, ठीक है। एक हायरार्की बनाएंगे, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा एंजाइटी है वो टॉप नंबर पे आएगी, उससे कम किससे है, उससे कम किससे है। तो आपने सपोज 5 चीज का लिस्ट बना दिया, सबसे ज्यादा एंजाइटी पेशेंट को किस चीज से होती है, सपोज उसने बोला अगर मेरे ऊपर स्पाइडर चढ़ जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, ठीक है। उससे कम एंजाइटी किससे होती है, अगर स्पाइडर को दूर से देखा, ठीक है। तो ऐसे करके लिस्ट बनानी होती है। फिर ग्रेजुअली पेशेंट को एक्सपोज करते हैं फियर स्टिमुलाई से, एंड फिर आपका पेशेंट को रिलैक्सेशन सिखाते हैं साथ में, जिससे कि विद टाइम क्या हो, अगर वो स्टिमुलाई जर्नल या पब्लिक कंडीशन में पेशेंट के, रियल लाइफ कंडीशन में पेशेंट के पास आ रहा है तो पेशेंट रिएक्ट ना करे उतना पूरा, ठीक है। बस देखिए, थेरेपिस्ट टीचर्स पेशेंट रिलैक्सेशन, desensitization begin, the patient relaxes, vividly imagines fear surrounding sense, starting with those that are only mildly anxiety provoking, और धीरे धीरे आपका क्या होगा कि आप encourage करेगा उस fear को confront करने के लिए, ठीक है। फ्लडिंग आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा, एकदम बम्बार्डमेंट कर दिया जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। आपको इस चीज से डर लगता है, जाइए काम करिए, ठीक है। More intense form of exposure therapy where a person is exposed to their most feared object or situation for a prolonged period without any gradual build-up. तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ समय तक पेशेंट एंशियस रहेगा, धीरे धीरे एंजाइटी कम हो जाएगी, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ द कंडीशन फियर रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे कि हमने पैवलो और डॉग वाला अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि पहले तो स्टार्टिंग में बेल से ही डॉग का सलाइवा शुरू हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो कंडीशन था वो धीरे धीरे कम होता रहा, ठीक है। तो बाद में बेल बजाने पे डॉग का सलाइवा आना बंद हो गया, ठीक है। तो यही चीज इसको अप्लाई किया हुआ है। नो रिलैक्सेशन टेक्निक, एंजाइटी रिड्यूसेस नेचुरली ओवर टाइम थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर, ठीक है। बार बार किसी चीज को एक्सपोज किया तो डर कम हो गया, ठीक है। फ्लडिंग एज यू कैन सी, प्रोग्रेसिव एक्सपोजर में आपको फोटो दिखाई जा रही है, फिर आपको इमेजिन करने को दिया जा रहा है, वीडियो दिखाई जा रही है, फ्लडिंग में एक बार झोंक दिया आपको, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा एंशियस हो, जिनको कोई बहुत गंदी ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, हार्ट कंडीशन हो, तो उनमें ये टेक्निक नहीं यूज करनी चाहिए। एवर्जन थेरेपी, एवर्जन नाम से मतलब समझ लो कि अनडिजायरेबल कोई भी चीज है उसको, आपको जो भी चीज आपको एंजाइटी प्रोवोक कर रही है या जो भी चीज आपके लिए अच्छी नहीं है उसको किसी अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस के साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है। जैसे कि एक ड्रग आती है डाइसल्फिराम अल्कोहल में,
ठीक है, वो देख आपने ऐड भी देखा होगा, घर वाले खाने में मिला के कोई दवाई दे देती थी मम्मी, तो पापा पीते थे तो उनको शराब पीने के बाद उल्टी आ जाती थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जगह देखा होगा। तो ये अवर्जन थेरेपी है। अल्कोहल का कॉम्बिनेशन आपने उस दवाई के साथ, जब भी अल्कोहल लेता है पेशेंट तो उसको बहुत गंदा रिएक्शन होता है, तो अल्कोहल से अवर्जन, एकदम उससे मन ही उठ जाता है, ठीक है। ऑल्दो ये दवाई बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये क्या बोलता है, रिड्यूस और एलिमिनेट अनडिजायरेबल बिहेवियर लाइक एडिक्शन और सेल्फ हार्म बाय पेयरिंग देम विद अनप्लेजेंट स्टिमुलाई. Therapist uses unpleasant like nausea, shock or bitter taste when client engage or thinks about unwanted behavior. जैसे कि बहुत बार पेशेंट को नेल बिटिंग की हैबिट होती है, तो क्या करा होता है कि रबर बैंड टेक्निक, जब भी आप नाखून काटोगे एक रबर बैंड से अपने आप को मार लेना, ठीक है। जैसे ही नाखून चबाएगा तो पेशेंट को रबर बैंड खींच के अपने आप को मारना है, तो नाखून चबाना वो पेन के साथ उसने क्या बोलते हैं एसोसिएट कर दिया, तो अवर्जन हो जाएगा, समझ गए। It create a negative association with the behavior so that the individual is less likely to engage in it. जैसे कि एमेटिक थेरेपी है, कोई आपका डाइसल्फिराम जो मैंने ड्रग का नाम बताया था, उसको किस दारू के साथ लेंगे तो उल्टी आ जाती है, ठीक है। अवर्जन इमेजरी एंड विजुअलाइजेशन, इसमें आपको कोई अनडिस्टर्ब्ड इमेज दिखा दी, ठीक है, पेशेंट की, पेशेंट को कोई भी जो भी डिस्टर्बिंग इमेज या फिर वीडियो दिखा दी, कोई भी बिहेवियर कम करना है तो। फिर है पेराडिक अवर्जन थेरेपी, ये आप यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए। और अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, कोई भी गंदा ऑर्डर वाली चीज सुंघा दी अगर पेशेंट का बिहेवियर कम करना है तो। नेक्स्ट है आपका ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है, समवट सिमिलर टू क्या बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन ही ओसीडी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी यही किया जाता है, पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है, उसके जो फियर स्टिमुलाई है वो आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दोगे कि आप इमेजिन करो कि कोई चीज़ गलत आपके सामने रखी हुई है, गंदगी रखी हुई है, तो आप कैसे बिहेव करोगे। फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स जो भी है, हैंड वॉशिंग है, उसको प्रिवेंट करोगे, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ेगा और रिस्पॉन्स कम होता जाएगा, तो ये अभी आपका अनलर्न किया जा रहा है, ठीक है। It helps person realize that nothing bad happens when they don't perform the compulsion, which will reduce fear over time, ठीक है। प्रोसेस आपने क्या किया, आइडेंटिफाई ट्रिगर, हायरार्की, गाइडेड एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है। वैसे ही वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर थेरेपी है, इसमें एक आपका वीआर मॉडल होता है, उसके वाया पेशेंट को इमेजेस दिखाई जाती है, लाइव एक्सपीरियंस जैसा होता है, और आपका रिस्पॉन्स प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। Modern form of exposure therapy that uses virtual reality technology to simulate feared stimulus or situations. Client wear VR headset and immerse in a realistic situation with their feared situation. Allows safe control and repeated exposure. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए। तीसरा है कंटिंजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटिंजेंसी मैनेजमेंट में कोई भी बिहेवियर आपको मॉडिफाई करना है, तो या तो पेशेंट को पनिशमेंट दोगे अनडिजायर्ड बिहेवियर के लिए, या फिर उसको रिवॉर्ड दोगे डिजायर्ड बिहेवियर के लिए, ठीक है। ऑफन यूज इन एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम टू रीइंफोर्स एब्स्टिनेंस, ठीक है। टेक्निक्स क्या होती हैं, आपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने रीइंफोर्समेंट सेलेक्ट किया। अगर आपका सपोज अगर कुछ रिवॉर्ड देके पेशेंट का बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है, तो आपने वो रिवॉर्ड का वो किया। जैसे रिवॉर्ड हो सकता है कि अगर आपने सब्सटेंस नहीं यूज किया, यू नहीं किया, तो आपको 1 घंटा टीवी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वो पेशेंट अगर टीवी के लिए मोटिवेटेड है, तो पेशेंट अल्कोहल से उतने समय के लिए दूर रहेगा, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक है, डिसाइडिंग व्हेन एंड हाउ ऑफन टू गिव दैट, कब कितने घंटे बाद, कितने कितने हफ्ते में कितने दिन देना है, फिर और उसका मॉनिटर करना है फीडबैक कि कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। उसी का ही एक आगे पार्ट होता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए, सपोज आपको स्टूडेंट्स के लिए, खास करके छोटे बच्चों के लिए, अगर उनको बोला कि हमको 1 आवर वीडियो गेम खेलना है, तो 1 आवर वीडियो गेम खेलने के लिए आपको 5 स्टार कलेक्ट करने हैं। वो 5 स्टार कैसे कलेक्ट करेंगे, 1 स्टार आपने अपना रूम साफ किया, 2 स्टार अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, 3 स्टार आपने सारी वेजिटेबल्स खा ली, 4 स्टार आप टाइम पे सो गए, 5th स्टार आपने कल का टेस्ट में अच्छा किया। आपको 5 स्टार मिल गए, तो आपको वो 1 to 1.5 आवर गेम का मिल जाएगा। जैसे हम पैसे इकट्ठा करते हैं ना, जैसे आपको कोई फोन खरीदना है, तो आपने 10,000, 20,000, 25,000 इकट्ठा करके फोन खरीदा, तो वही टोकन इकोनॉमी, जो वर्ड की इकोनॉमी है, उसको आप अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कैसे लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं टोकन इकोनॉमी, ठीक है।
जैसे टोकन इकोनॉमी, आई एम वर्किंग फॉर 5 स्टार, ये आपको गेम खेलना है, तो आपने धीरे धीरे आपने टोकन इकट्ठे किए और फाइनल टोकन से आपने अपना डिजायर्ड आउटकम ले लिया। फिर है बिहेवियरल एक्टिवेशन, स्पेशली डिप्रेशन की पेशेंट्स में पेशेंट को बार बार जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसकी तरफ पुश किया जाता है, ठीक है। एंगेज इन एक्टिविटीज दैट पेशेंट यूज्ड टू एंजॉय, चाहे वो पेंटिंग है, सिंगिंग है, आउटगोइंग है। तो ये आपका क्या होता है कि बिहेवियर जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो अवॉइडेंस वाला बिहेवियर हो जाता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो एक दिन में तो वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, तो उसके लिए लगना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ना, पेशेंट को पुश करो कि चलो आज आप आधा घंटा ही सही कुछ पेंट करो, आधा घंटा ही सही वॉक करके आओ, तो धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएंगे, ठीक है। साइकिल ऑफ डिप्रेशन, इंक्रीज डिप्रेशन मूड, एक्सपीरियंस लेस प्लेजर, नॉट एंगेजिंग इन एक्टिविटीज। वही बिहेवियरल एक्टिवेशन में आपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया तो देखा जाता है कि डिप्रेशन धीरे धीरे कम होता है। फिर मॉडलिंग, देख सकते हैं कि जैसे भी आप पेशेंट को जो बिहेवियर चाहिए उसको किसी डिजायर्ड पर्सन से मॉडल करके दिखाइए। जैसे आप ये देख सकते हैं कि बच्चे के फादर पेपर पढ़ रहे हैं, तो बच्चा भी एक रीडिंग की हैबिट कर रहा है। इसी के ऑपोजिट फोन यूज करते हुए भी एक पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें दोनों पेरेंट्स फोन में है, तो बच्चा भी फोन यूज करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मॉडलिंग इज, ठीक है। Another person demonstrate a desired behavior which the client then practice. It useful for teaching social or coping skills. A person that is considered an excellent example of something. Modeling consists of attention, retention, reproduction and motivation. पहले देखेगा कि सामने वाला जो मॉडल इंसान है, मेरा मॉडल है, वो क्या काम कर रहा है, उसके बिहेवियर को रिटेन करेगा, फिर उसको रिप्रोड्यूस करेगा, फिर अपना भी वो चीज इनकलकेट करेगा और फिर मोटिवेटेड रहेगा उस बिहेवियर को वापस करने, ठीक है। Again, next one is social skill training. It helps individual improve their interpersonal communication and relationship, include role playing, feedback and homework assignment, ठीक है। तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक ग्रुप में कैसे काम करना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, अपने आप को ग्रुप में कंडक्ट कैसे करना है, लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करनी है, तो ये सब चीजें आपका सोशल स्किल ट्रेनिंग सिखाती है। इनफैक्ट अब बैठ के बस किसी को सुनना या अपनी बात रख पाना भी सोशल स्किल ट्रेनिंग में आ जाता है, ठीक है। So with this I'll end. These are the references and thank you so much. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Surbhi, Junior Resident in the Department of Psychiatry. And today I will be presenting my seminar on the topic of rational emotive behavior therapy. So we will be covering this seminar under these broad headings. I'll be giving an introduction, then we'll talk a little bit about Albert Ellis, foundational concept, key concepts, philosophical viewpoints, goals and assessment, technique, and followed by summarizing the whole seminar and references. Introduction. Rational emotive behavior therapy is based on the premise that people are not disturbed by the events themselves, but by the interpretations and belief they hold about those events. It teaches individuals to identify, challenge, and replace irrational beliefs with rational, realistic ones, promoting healthier emotional and behavioral outcomes. Albert Ellis. Albert Ellis was an influential American psychologist and psychotherapist, best known as the founder of rational emotive behavior therapy. He is considered one of the most important figures in the development of modern cognitive behavioral therapies. In the early 1950s, Ellis broke away from the traditional psychoanalytic method and developed what initially he called rational therapy. And later on, he renamed it to rational emotive behavior therapy because amongst the psychologists, it was a viewpoint that it is a therapy without emotions. So therefore, he had to rename it. And this breakthrough was because he had become dissatisfied with the views and the premise of psychoanalysis and the person centered therapies. So he introduced the idea that irrational beliefs are at the core of emotional disturbances. His approach focused on identifying, challenging, and replacing these beliefs with rational alternatives. Foundational concept. So this whole therapy is founded, basically the whole foundational concept of the therapy is firstly, cognition influences the emotions and the behavior. How do you think about something determines how you feel and act about things.
people hold irrational beliefs. Many emotional problems arise from rigid and unrealistic thoughts, like I must be perfect. It is a very irrational and unrealistic thought, but this belief is going to give rise to a lot of problems in it. Belief can be changed by disputing and replacing irrational beliefs. People can develop more adaptive responses. Albert Ellis is known to give the ABC model of REBT. So the ABC model is wherein A stands for activating. So wherein activating means that there has to be an activating event which has led to the problems in life. B stands for belief. So a patient after going through an activating event in life, they form a belief around that event. Always this belief has to be irrational. Then the consequences. After forming a very systematic belief around that activating event, the consequences succeed. D and E are from the psychotherapist point of view. D is wherein the psychotherapist has to disrupt this whole irrational belief. An effective outlook, which the patient has to follow through and has to develop through the succeeding therapies. So this is an example of how things work. A is that you fail in a job interview. So this has been the act. B is that I am a failure and I will never succeed. So what will be the consequence? Depression and giving up. So the REBT will target the B, that is the belief which has been formed after the activating event, to change the consequences. Belief. What are belief? Irrational beliefs are rigid, illogical, and unrealistic. I must be liked by everyone. Rational beliefs are flexible, logical, and self-helping. I prefer to be liked, but I can accept if someone doesn't. Cognitive restructuring. This involves identifying, disputing, and replacing irrational beliefs with rational alternatives. Techniques include logical analysis, empirical questioning, and functional questioning. Is this belief helpful? So during the whole therapy sessions, this is the work of the therapist to provide them logical analysis to make the patient capable enough of answering the empirical questions and forming functional questioning. Unconditional acceptance. REBT emphasizes three types of acceptances. First is unconditional self-acceptance. I accept myself even when I fail to behave poorly. Unconditional other acceptance, wherein others are fallible and imperfect, and that's okay. Unconditional life acceptance, wherein life can be difficult or unfair, but I can still choose how to respond. Emphasis on responsibility. So the therapist always provides the emphasis on responsibility. So RABT teaches that we are responsible for our emotional reactions because we create them through our belief. This promotes empowerment and personal growth. Active directive approach. So in the active directive approach, REBT is just not reflective or supportive. The therapist plays a very active role also, wherein he or she helps the clients in identifying the irrational beliefs, in actively dispute them, and practice new thought patterns and behaviors. Goal-oriented and time-limited. The therapies have to be goal-oriented, wherein the therapist has to lay down the goals of the therapy and what is the expected outcome of the therapy. It has to be time-limited. And focus has to be on the present and the future. Masturbation. Now, this was a term which was coined by Albert Ellis himself. So, as per him, it is the tendency to impose absolutist, unrealistic expectations, such as I must do well, others should treat me fairly, and life ought to be easy. So, as per him, masturbation had three domains: self demands, other demands, and world demands. Self demands wherein the person feels that he has to be perfect. Other demands wherein the person feels that the others around him have to be perfect. And in the world demand, the person will feel that the world has to be perfect around him. And why is this phenomena harmful? Because it creates rigid expectations that are often impossible to meet, triggers emotional distress when reality doesn't align with the must, prevents flexible, rational thinking and acceptance. So these are the examples.
as to how is rational alternatives different from masturbation. So whenever a patient will come to you and say, I must succeed. So this is the goal of the therapist, to provide a rational alternative that I want to succeed, but I can accept failure. People must like me. I prefer to be liked, but I'll survive if they don't. Life must be fair. Life isn't always fair, but can manage. Now, talking about the philosophical viewpoints, there are some philosophies from the past, from the greater minds, which have also played their role into shaping the REBT. So, rationalism. First is emphasis logical thinking over emotional reasoning. Stoicism, wherein promotes control over emotions through thought. Humanism, wherein values dignity, growth, and self worth. Constructivism, reality is shaped by beliefs which can be changed. And existentialism, wherein encourages responsibility and acceptance of life's limits. Now, what are the goals of REBT? First is to achieve emotional well-being. Second is to increase the personal responsibility. Third is to reduce self-defeating behavior. Fourth is to promote flexible logical thinking. And encourage unconditional self-acceptance. Assessment. Assessment is obviously, it is on history taking, on serial MSCs, and even when the therapist will conduct the sessions subjectively, objectively, the therapists will make out whether the sessions are being successful or where the patient or the therapist are lagging behind. But we have some tools also for that. First is the Miller clinical multi-axis inventory. Then we have Beck depression inventory, and then we have frustration discomfort scale. So this scale helps us to distinguish between self-esteem from frustration tolerance. Now, therapeutic relationship. It is very important. What is the role of therapist? The role of therapist is to be very active, directive, and educative. Nature of relationship has to be collaborative, not overly nurturing. It is very important that it has to be collaborative and not nurturing. Emotional tone has to be honest, accepting, and goal focused. And focus has to be on the present belief and behaviors. And goal is to empower the client to self regulate emotionally and think rationally. Now, what are the techniques that we use? First is cognitive disputation, wherein you challenge the irrational thoughts. Then behavioral exercises, wherein we give assignments for homeworks and facing fears. Emotive strategies, role playing, humor, and homework assignments for real life practice. Now, approaches. There are basically four approaches: cognitive approach, emotive approach, behavioral, and then insight building. Cognitive approaches. Goal of the cognitive approach in therapy is to reduce emotional distress by changing faulty thinking, develop rational adaptive belief, increase personal responsibility and self-control, build long-term resilience and emotional well-being. Behavioral approaches, homework assignments, trying new behavior in real-life situations, role-playing to practice social skills or confront fears, behavioral rehearsal of new rational responses, active scheduling to overcome avoidance or passivity. Emotional approaches. The emotional approaches, you can they can be emotions are based. You can try to tell this to the patient that emotions are based on belief. How we interpret events shapes our emotional response. Irrational emotions have to be addressed. Intense, disappropriate emotions are caused by irrational belief. Healthy emotional expression has to be encouraged, wherein the clients are encouraged to express and experience emotions in adaptive way. Disputation of emotions, challenging irrational emotional reaction and replacing them with healthy rational ones. And finally, self-acceptance, learning to accept and deal with emotions without self-criticism. Insight. So when insight, there we have to, the aspect is that we have to believe, create emotions. This is what we have to inculcate in the client. Insight is how beliefs lead to emotional consequences. Irrational beliefs have to be addressed. Understanding that irrational beliefs create distress and often unrealistic.
ABC model has to be included, where it realizes that beliefs mediate the connection between the events, the emotions. Unconditional acceptance, gaining insight into the importance of accepting oneself, other without demands. Change and possible, believing that emotions and behaviors can be modified through changing irrational behavior. In the end, I would like to summarize that REBT is a therapeutic approach that emphasizes the power of rational thinking in overcoming the emotional difficulties. It helps individuals identify and dispute irrational beliefs, leading to more balanced emotional responses and healthier behavior. By focusing on self acceptance, responsibility, and rational thinking, REBT helps individuals create lasting psychological change. This is a very famous quote given by Albert Ellis. You largely construct your own emotional destiny. The good news is that you can change. These are my references. Thank you.